There are writers around chronicling love, hatred, smiles, and tears, penning many more of the world of politics and society at large. Literary society has no reason to be walked up with my participation or otherwise, I told myself. I was sad looking around that, like almost all other languages, readers are a shrinking community in my Assamese too. As a professional journalist and broadcaster, I found myself amidst real stories 24/7. Life is stronger than fiction. The journalist in me reminded my presumptuous writer self and old days. The sparring between these two selves inhabited my fictional pen. Thankfully, I realized that a writer cannot escape his responsibility to the society, citing flimsy excuses like the busy schedule of a spaceman, nor can he or she ignore the stupendous variety the world around to the wielders of a creative pen. A new story dates after a few hours. A successful work of fiction is timeless, provoking succeeding generations of readers to decipher new meanings. From experimenting day long wait for a tranquil to living amidst the Gen X engrossed on internet and cell phones, the writer in me cannot ignore the massive millennial crossover connoisseurs witnessed many theoretical constructs in literary academics. At this moment, I am proud to express that of many contests and concurrences, modern Assamese prose and poetry, the previous century is a mighty component of Indian literature, which works compelling international admiration. As one of the top 50 languages, counting its number of speakers, which is more than many European languages, Assamese literature manifests its connoisseurs, the happy continuum of a rich legacy since Madhava Kandali, who translated Ramayana in early 14th century, through Shankardeva and Madhavdeva, defining canonic spiritual celebration. In the modern age, Lakshminath Besburua pioneered its international concept, ably followed. As a humble pedestrian in this mighty path, I painfully realized how my realm had descended into instability. Worse, this instability was engineered by many obfuscate the mighty existence of Assam in millennia of old Bharata by some chimera of neighborhood that defy history. Amidst this confusing scenario, I have been writing stories from teenage romance to terrorism, from international machinations to the labor journey of a bucolic society with many feudal elements, technological life of investment economy and democratic temper. Confident steps forward and frustrated reactions. My small corpus includes all the myriad facets the society in the valley experiences. Yes, I tried other genre too, plays, travelogue, poetry, and of course the journals.
I thank esteemed readers for their very wholesome response to my short fiction. And of course, I thank Sahitya Academy for the kind recognition of my humble pursuit. We are living at a time when the very experience of literature is interrogated. Many instruments of social media are really lieutenant. The, the epitaph on literature is dated by now. Encountering changes is not experience of our generation only. The human history reminds us. Indian literature living through millennia in a binary of the epic tradition, epic tradition and disparate folk gems, witness a uh, commingling of the alien and alien to our realm. Besides delineating fiction, photograph, reimagination of history, episodes, and characters of the great epics. The binary of the court literature and folk treasures got obliterated in this abundance, which I noticed very visibly in Assamese. This reaching out to the world of genre from the women in Bounce Light. As a media person who did the postgraduate studies in physics and continue writing short fiction, I seek to term this commingling from the mechanics as the highest common factor in today's, in today's global literary conversion. Thank you. मैं आमंत्रित कर रही हूँ अ, श्री तपन बंदोपाध्याय को, बंगाली लेखक। uh, respected chief guest, fellow writers, and august audience. I was born at a small village, Kalarwa, now in Satkhira district, Bangladesh. Stand just after my birth, India was partitioned, and my family crossed the border and settled in village Baduria, now in district Uttar Chobbish Parganas, West Bengal. Since childhood, I had a strong hunger for reading storybooks, but unfortunately, there was no library nearby. So I had to depend on my textbook. I took up writing the rhymes while I was a student in the primary level, and the habit continued for the rest of my life. In the early years, I intended to become a poet, but while I joined the state civil service, common people and their struggle for existence, and I thought writing only poems will not be enough to share my experiences with the readers. During my long literary career, I have published more than 100 fictions, including crime fictions, 400 short stories, 11 books of poetry, many children's fictions and short stories, many translation works.
a number of travelogues and prose writings. Translation Prize by the Sahitya Academy in the year 2019. My epic novel, Nadi Mati Aranya, is based on 100 years of Sundarban settlements in West Bengal. The political struggle in the rural areas between the political parties. My historical epic novel, Malava Kaushik, is based on the life and works of Bujju, later known as Bukshu, a legendary Dhruva singer. Another epic novel, Tattvamoshi, that means Tattvamoshi, is based on the lifestyle and achievement of the rishis of Upanishads. My trilogy, Maul Bonir Sereng, is based on the tribal life of West Bengal. Other important fictions like Lal Shalu, Khando Bikhando, Samudra Sankochil, Ami Baste Chai, etc. It was the struggle of the common people of rural villages. 50 works, crime fiction, and my detective, Gargi, an intelligent and beautiful lady, is now a household name in Bengal for her innovative methods of detecting uh, serious crimes. Birbal, the award-winning novel, is completely different in the respect of the other works of fiction. Birbal, who is generally known as a guest in Mughal Empire, and he was a companion of Akbar, was not actually a guest or a joker. I have shown him as a trained philosopher and guide of Akbar, and because of his 30 years consistent assistance and prudent advice, Akbar became Akbar the Great. Finally, I like to give my heartiest thanks to the authorities and selectors of Science Academy for giving me this natural award. Thank you. थैंक यू श्रीतपन जी। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ बोडो से पुरस्कृत रश्मि चौधरी जी। काल में जैसे थे आज भी मैं वैसे ही हूँ और आगे भी ऐसे ही रहेंगे जैसा रहता है जन्म और मृत्यु जैसा रहता है समय और इसके दौर। खुलुमबाई, नमस्कार। सबसे पहले इस सभा में उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सचिव साहित्य अकादमी बोर्ड से के सभी सदस्यों और 2022 के सभी पुरस्कार विजेताओं और सभा में उपस्थित मेहमानों को मेरा हार्दिक नमन। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे 2022 के साहित्य अकादमी बोडो भाषा से नवाजा गया है। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक लंबे जंग के बाद जख्मी सी, हाथों में जंजीर, पैरों में जंजीर, फिर भी मैं जी उठती हूँ। अभी अभी लगे जख्मों पर मलहम लगाकर एक अक्षर के साथ, एक शीशे की तरह, एक शीशे की तरह।
ललिता चौधरी और स्वर्गीय अंगद चौधरी की मैं तीसरी संतान हूँ। वो 1974 की बात है, जब मैं तब मेरे गरीब पिताजी एक हिंदी शिक्षक, एक समाज सेवक और रोमन लिपि के एक क्रांतिकारी थे। रोमन लिपि आंदोलन जिसे 1974 में बौद्ध साहित्य सभा द्वारा शुरू किया गया था, उस समय पूरे असम राज्य में पूरे बौद्ध समुदाय को शामिल किया गया था, जिसके बाद सभी बौद्ध क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पुलिस अभियान शुरू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों को कहीं पीड़ा हुई। पुलिस से मुठभेड़ के समय पिताजी को जो पीड़ा सहनी पड़ी, वो जिंदगी का सबसे लंबा जंग था। जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, 1985 में वे बीमारी के कारण अपंग हो गए। अच्छी चिकित्सा न उपचार न मिलने के कारण 1985 से 2021 36 वर्ष तक वे में रहे। उसी दौरान न खाने के लिए अच्छा, न ही लेने के लिए कपड़े थे। पिताजी के इस हालत के वजह से हम तीनों बच्चों के सपने भी अधूरे रह गए। शिक्षा के क्षेत्र में आगे न बढ़ पाने का भी ये बहुत बड़ा था। मैट्रिक यानी पास की समय बीतता गया। गरीबी और अकाल भी जीवन में बढ़ता रह गया। उस फैसले अपने निर्णय लेने से पहले सब कुछ तय हो जाता है। जिंदगी के एक नए पड़ाव पर लाकर खड़ा कर के कारण एक औरत बनकर जिस दुनिया में समझ सकता है। पिताजी से प्रेरित होके तो मैंने जिंदगी के कुछ लम्हे कलम कर कसक अक्षर से साझा करना शुरू किया। शायद मेरे जीवन के अनुभवी कलम को लिखने पर आकर्षित किया। बुबलिनी गुठाल यानी समय का दौर और सांसनी मदिरा यानी ख्याल की नशा, इस दो कविता संग्रह से ही मैं बौद्ध साहित्य जगत में कदम रखा और इन्हीं कविताओं ने मुझे साहित्य अकादमी से रूबरू किया था। इसी सम्मानीय संस्था द्वारा आयोजित एक कवि और इससे मेरा भारत के साथ पहचान हो गए और प्रेरणा ही मिली। मैं इस मुकाम पर हूँ, पर मैंने कभी किसी एवं कविता का लेखन नहीं करा। इसके लिए तो मैं दिल से क्षमा प्रार्थना। समय और हालत इसकी एक वजह है। आज मुझे एक माँ होने के नाते मेरे बेटे हिंसांग पे मैं है कि उसे मुझे कभी इस मुकाम तक पहुंचने में नहीं रखा। वह कहता था है, आज जीवन में सब अवसर बार बार नहीं आते। आप मेरे नजर में एक माँ ही नहीं, एक अच्छी कवि भी है। आप एक अच्छे कवि बने, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और हमेशा से मुझे प्रेरणा देने भागीदारी बनकर होने वाला बड़ो जोग लेखक राम, डॉक्टर अनिल बड़ो और डॉक्टर देवकांत
राम सियारी जी को। अंत में मैं अपने पूरे परिवार का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरी माँ और सर पिता को कोटि कोटि नमन करती हूँ, जिसके निरंतर प्रोत्साहन के वजह से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। एक कवि होने के नाते कविता से आज का मेरा यह भाषण करना चाहती हूँ। कविता का शिरोनाम जीवन। मैं नहीं हूँ कभी खोए हुए इधर उधर लिख लिख कर मैं एकांत में गाती हूँ इस कविता से हजारों दस्तान। कभी कभी मैं गा गा कर रो पड़ती हूँ, रो हंस पड़ती हूँ, कभी और फिर से जिंदा हो जाती हूँ और मैं अपने लिए दुनिया के कोई भी कोने में थोड़ी सी जगह बना लेती हूँ। एक स्त्री की कविताएं। एक मामूली स्त्री के पास ना कोई अपना, ना कोई पराया। सूरज उगने पर ही उनका फांसी पर लटकाया जाता है। हर पल हर वक्त स्त्री का जन्म हो तो स्त्री के पास या फिर बच्चा नाराज की भी कुछ कीमत नहीं रहती, क्योंकि जान से ओला किसी को देने के लिए भी कुछ नहीं रहता। एक एक मामूली स्त्री के पास उनके घर के दहलीज पर जल दिए की रोशनी कोई काम नहीं होती, क्योंकि नीला आकाश देखो मुझे गौर से देखो, मुझे भी तुझे। एक टूटी हुई स्त्री के पास आंसू की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि आंसू हर
grows into a full-fledged verbal war. A fight with words, as though it is something like a war, while turning the quarrel into a living character, as though quarrel by itself is a character, keeping the embers of love. What do poor people do? Keeping the embers of life burning in the dismal routine of drudgery. The poor are destined. So the quarrel itself is something which keeps them alive. By the time it was 1990, and I wrote another piece called The Quill, called Gojari. Gojari, इसको हिंदी में बोलते हैं. Published 3 years later in 1993. It begins with how my mother made quilts of discarded pieces of worn out garments, each revealing to her the story of their secrets. But in the essence, it is a tale of teenage love, or rather a quest of love, in the wake of discovering sexuality for the first time. So a lonely boy living in a small town, scribbling poetry or making splashes of paint in a room, opening out on the street, encounters a girl who mischievously entices him by throwing peanuts she's nibbling in his direction. The peanut trail is enough to arouse curiosity, attraction, and fantasy. The boy builds up a secret dream world in search of the elusive girl who appears in mysterious guises to leave him in a state of ecstatic arousal. But the thought of his secret becoming public turns all his dreamscapes into a terror-filled world. The very idea of it being revealed, makes him feel in a terror-filled world. The story is partly erotic, has dimensions that touch the spiritual. What do you call spiritual after all? Something which is unattainable, something you never attain in your life, but you always yearn for. So in a way, this lust for a little girl that a young boy espouses actually has that dimension. So it is like said the spiritual, it has the dimensions of that touch the spiritual, where the desired object remains forever unattained. Something which never comes in your hand. The remaining chapters combine stories of homes sought, lost or found, along with other explorations. By the time the last chapter was published, the intermittent writings of the 14 pieces had passed nearly half a century. It took about 50 years to complete that, just these 14 chapters. It happened at different periods of time. But this is how it happened. I've only spoken about the first four. Written in an intent, idea was not to do with writing in Gujarati about one's own personal story. Written with an intent to evolve a linguistic idiom running across formats, different formats of different literary genres, like essay, a poem, or a narrative, to shape an organic and deeply personalized prose. This was my intent. It uses an eclectic mix of the Kathiawadi dialect and spoken word, combined with an invented vocabulary drawn from variety of sources. This is all that's about. The translations I read out in some of the uh, texts were made by my old friend who is no more. Her name is Mala Marwa. She herself was a poet, and while she was a student in Baroda, I made rough Hindi draft for her. She will cast it into English, read it out to me. I will sit with her, then we'll go back, and we had this
triple or sometimes 4 sessions to finalize the paper. I think it's done a good. This is my review. Thank you. थैंक यू गुलाम मोहम्मद शेख साहब। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ हिंदी में पुरस्कृत बद्री नारायण जी को, और आगे जो रचनाकार अपना वक्तव्य रखने वाले हैं उनसे निवेदन है कि 10 मिनट का समय आपके लिए निर्धारित है, उसी 10 मिनट के अंदर अपनी बात को यहाँ पर रखें। आदरणीय उपाध्यक्ष हिंदी साहित्य अकेडमी श्री सुमित शर्मा जी, आदरणीय सुमित शर्मा जी, और भारतीय भाषाओं के नक्षत्र मंडल, साहित्य का जो नक्षत्र मंडल है जो यहाँ उपस्थित है, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और अपनी बात कहने जा रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा समय पे ही समाप्त करूँ। एक तो ये जगह अच्छी नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इस वर्ष का साहित्य अकेडमी मुझे मिला, तो इस वर्ष हिंदी साहित्य का साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलने पर मैं अकादमी एवं संपूर्ण साहित्य जगत के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मैं बार बार यह कहता रहा हूँ कि कोई भी पुरस्कार हमें एवं हमारी रचना यात्रा को सम्मानित तो करती ही है, साथ ही साथ हम वक्ता के लिए नई चुनौतियां भी खड़ी करती है, जैसे इस पुरस्कार ने भी किया है। ये चुनौतियां हमें बार बार कहती हैं जो रचा है उससे बेहतर रचो, जो रचा है उससे बेहतर रचो। वे हिंदी के महान कवि महाप्राण श्री सुल्तान त्रिपाठी निराला के शब्दों में हमसे आह्वान करती हैं कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, शक्ति की करो मौलिक कल्पना। वो हमें मौलिक कल्पना करने के लिए बार बार कहती एवं कहती हैं बार बार कि नौलय नौलय नौछंद नौ गति एवं नई बात कहो, नौलय नौछंद नौ गति और नई बात कहो। साहित्य अकेडमी का यह पुरस्कार हमारे समक्ष यह भी चुनौतियां खड़ी करता है कि मेट्रोपोल मानस, ध्यान दीजिएगा इस शब्द पे मैं कह रहा हूँ, मेट्रोपोल मानस जिसका आज के साहित्य पर आधिपत्य है, उससे अपनी कविता को बचाते हुए कैसे सीमांत अतरे कोने एवं दूर दूरस्थ की कविता लिख सकूं, ये हमारी एक बड़ी चुनौती है। यह पुरस्कार हमारे समक्ष यह भी चुनौती खड़ी करती है कि कैसे ऐसा साहित्य रच सकूं जो विभाजनों, बनामों एवं टकरावों से परे जाकर एक समरस समाज रचने में हमारी मदद कर सके। इस तथ्य से हम सभी परिचित हैं कि भारत में 90 के दशक में जो नव उदारवादी आर्थिक व्यवस्था लागू हुई, उसके सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही परिणाम हुए। सकारात्मक परिणाम तो यह है कि समाज में आर्थिक गतिशीलता आई, और नकारात्मक परिणाम यह हुआ कि इस आक्रामक बाजार में बढ़ते हुए उपभोग दृष्टि ने हमारी नैतिकता को गहरा आघात पहुंचाया है। इन्हीं वृत्तियों की कटु आलोचना हमें हमारे भक्ति साहित्य में मिलती है। कबीर एवं रविदास जैसे भक्त कवियों ने इसीलिए मायापुर बाजार की बार बार आलोचना की है। ये मायापुर बाजार है जिसकी हम आलोचना करते हैं, जिसमें लोभ, लालच, चालाकी के बढ़ते हुए लगभग 400-500 साल पहले जो हमारे भक्त कवियों ने महसूस किया था, उसका आज हम चरम महसूस कर रहे हैं, वो अपने क्लाइमेक्स पर है। मुझे लगता है कि आज उन भक्त कवियों द्वारा मायावाचार की गई उस आलोचना की हमें मौलिक कल्पना करनी होगी, जो उन्होंने अपने समय में एक यूटोपिया में एक ऐसे समय की आलोचना की थी जिसमें बाजार बहुत आक्रामक हो जाएगा और एक माया का बाजार लगेगा। हमें उसकी आलोचना करनी चाहिए। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य को अपनी अपनी विभिन्नताओं के साथ कई बार लगभग एक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस विविध भारतीय भाषाओं की अपनी अपनी आत्मशक्ति है। हमें इन आत्मशक्तियों की मदद तो लेनी ही होगी, साथ ही साथ आक्रामक बाजारी आधुनिकता, छल छद्म के हो रहे प्रसार में हम सभी भारतीय भाषाओं को अपनी जड़ों को फिर से पुनः परिकल्पित एवं आविष्कृत कर आज की सामाजिक संकटग्रस्तता का सामना करना होगा। एक तरह से री इमेजिनिंग आवर ओरिजिनल पावर, ओरिजिनलिटी, हमें हमारी स्थानीयता हमारी शक्ति है।
हमारी स्थानीयता हमारी शक्ति है। इसमें निहित रचना शक्ति को हमें खोज कर लाना होगा। उन्हें हमें नए संदर्भों में परिकल्पित कर अपनी रचना करनी होगी। यह तभी संभव होगा जब हम हिंदी का साहित्यकार होते हुए अपने अन्य भारतीय भाषाओं की स्थानिक रचना संस्कृतों के साथ अपना जुड़ाव स्थापित कर सकें। आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक और बात साझा करना चाहूंगा। 1990 के दशक में नौ उदारवादी अर्थव्यवस्था हुआ। से लघुतर की ओर ले जाता है। ये अब ये सामने आने लगा है। पहले हम लोग उसके जो आत्मशक्ति है उससे बहुत प्रभावित थे। यह भी चीज है कि अस्मितावाद अपने प्रारंभिक चरण में हमें शक्ल में वह हमें ही प्रस्तुत करने लगता है। यह धीरे धीरे हमें लघुतर एवं अन्य की हिंसक नकार की तरफ ले जाता है। लघुतर छोटे छोटे का और दूसरों का के नकार की तरफ हमें ले जाता है। वह गहरे अर्थों में हमें उस इम्पैथी को नकारता है जो हमारी साहित्य रचना को है। पर काया प्रवेश, जिसके बिना साहित्यकार रह नहीं सकता। तो मित्रों, आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर इन संकटग्रस्तताओं को याद करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती है कि रचना को हम चीजों में न तब्दील ना होने दें, रचना को थिंग्स में न बदलने दें। और कबीर जिसे कहते हैं माया की नगरिया में सब कुछ बिकानी, कबीर कहते हैं माया की नगरिया में सब कुछ बिकानी, तो हम कम से कम अपनी रचनाओं को इस बाजार में उन सब कुछ बिकानी वाली चीजों से बचा सकें और बिकने से बचा सकें और उसमें शामिल ना होने दें। क्योंकि कविता के बिना कवि एवं समाज का जीना ऐसा ही जीना है मानो ना जीना। कविता के बिना कवि एवं समाज का जीना ऐसे ही जीना है मानो ना जीना। आज आपने हमें सुना, मैं इसके लिए आप सबका बहुत आभारी हूँ। एक बात अपनी बात समाप्त करता हूँ। मेरे में जो कविता की आत्म चेतना है, कविता चेतना है, वो मेरी माँ के लोकगीतों से मुझे मिला, जो मैं बचपन में उससे सुना करता था। यानी जो मैं कह रहा हूँ एक तरह से उसकी जो भाव है वो हमें वहाँ से मिला, जो गांव में अपनी मेरी माँ सुबह 4 बजे रात को उठ करके गाता पीसते हुए गाती थी। तो इसलिए हम अपनी कविता और अपना साहित्य अकेडमी का ये अवार्ड भी उसे ही समर्पित करते हैं, उसकी स्मृति को समर्पित करते हैं। और एक कविता, छोटी सी कविता जो मैंने उसके लिए लिखी थी और जो मैं बार बार सुनाता हूँ जब कभी किसी मंच पे जाता हूँ, उस कविता के साथ अपनी बात की समाप्ति करता हूँ। कविता का शीर्षक है माँ का गीत, मदर्स लल्लाबाई इन इंग्लिश। अगर तू सूर्य होता तो आसमान में जलता रहता। अगर तू सूर्य होता तो तुझे दिन भर आसमान में जलना पड़ता। अगर तू चांद होता तो तुझे रोज रोज कसाई के कत्ते से पूर्णिमा से एकम तक कटना पड़ता। अगर तू तारा होता मेरे लाल तो मुझसे कितना दूर होता। अच्छा हुआ तू बद्रीनारायण हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद बद्रीनारायण जी। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ कन्नड़ में पुरस्कृत मुडनाकुडू चिन्ना स्वामी जी को। Good morning to all of you. Honorable Vice President and my fellow awardees, many dignitaries in the audience, members, the CFA committee members from Karnataka, my friends, and many more. It's a matter of great pleasure for me today to participate in this momentous award ceremony. Central Sahitya Academy Award would be a natural dream for a writer who has made a considerable amount of progress in his or her career of writing. I was always wondering about the process of selection for the award at multiple levels
without the knowledge of one another. If at all there is an award of highest reckoning without blemishes, it is this, the Central Sahitya Academy Award. I am happy, highly elated to be honored with this prestigious award. I thank everyone who is involved in the long process of selection and the Academy for the wonderful occasion. I come from a place called Chamarajanagar, which is home for two great Kannada folk epics, namely Manteswami Kavya and Malai Mahadeshwara Kavya, which are only comparable with Finland's classic Kalevala. The people in surrounding villages felt that the oral epics are part of their culture. They tirelessly sang epic poems at work and home. My mother was part of it, and so I was. My mother always spoke in metaphors, interspersed with proverbs and stories. Her pastoral wisdom enthralled me. I therefore believe that my inspiration is my mother. This apart, I draw influence from Buddha, Basavanna, Quotes, a social thinker and reformer of the 12th century in the northern part of Karnataka. And of course, Dr. B.R. Ambedkar, the treatise Treasure House of Knowledge in Modern Times. Basically, I am known as a poet. Out of 40 books I have brought out so far, 8 of them are poetry collections. Most of the language textbooks in high schools and universities in Karnataka carry my poems as a curriculum text, including the West Bengal University, Kolkata, and Nottingham Trent University, UK. But I also worked in other genres of literature such as plays, short stories, essays, monographs, autobiography, and so on. I did lay my hands on translation as well. Now I am facing queries from my close quarters that I should have got this award for my poetry. But no matter, I am proud to have this award for my book of essays, Bahutvada Bharata ಮತ್ತು Bauddha Tatvikate, which translate into English as Plural India and Buddhist Philosophy. The book deals with contextualizing as present India with the grandeur of the past in a philosophical sense. The essays are mostly influenced by Francis Bacon's narratives of high significance in short essays. I am from a Dalit background and opened up for writing in the early 1980s. I was born and brought up in a village. A Dalit is inherently associated with hunger and poverty. Added to that, the insult and injury due to the abhorrent practice of untouchability. I had my own share of experiences and and an indomitable urge to express my pain and failure. I had been a keen observant of poetry in Marathi, Telugu, apart from Kannada. The early voices in protest poetry, especially in Kannada, were robust, harsh, and to some extent crude, which was not palatable to me. I had my own idioms and images which one accelerates from both readers and critics. Rowena Hill, a British poet and resident of Venezuela, translated some of my poems into Spanish and English, which paved the way for my poetry to fly far and wide. I have participated in some international poetry conferences, festivals such as Grenada Poetry Festival, Nicaragua, Helicon Poetry Festival, Israel, and, and given poetry readings in Venezuela, UK, and France, which gave me unique experiences. Although the nitty-gritty of caste system was taken with aversion, the audience showed a great deal of interest in understanding the social milieu through my poems. There are translations of my poetry available in Hindi, Urdu, Marathi, Telugu, and the Tamil version is on the anvil. The sole objective of my writings is to infill love and compassion in human relationships, irrespective of caste, creed, and religion. Of late, I am writing about Buddhism, which promotes loving kindness, that is metta,
encompassing all living beings with compassion. In the end, I would like to conclude my speech by reading one of my acclaimed poems in modern Kannada poetry. The title of the poem is If I Were a Tree. If I were a tree, the bird wouldn't ask me before it built its nest what caste I am. If I were a tree, the bird wouldn't ask me before it built its nest what caste I am. When sunlight embraced me, my shadow wouldn't feel defiled. When sunlight embraced me, my shadow wouldn't feel defiled. My friendship, my friendship with the cool breeze and the leaves that would be sweet. My friendship with the cool breeze and the leaves that would be sweet. Raindrops wouldn't turn back, taking me for a dog eater. Raindrops wouldn't turn back, taking me for a dog eater. When I branch out further from my roots, Mother Earth wouldn't flee, shouting for a bath. The sacred cow would scrape her body on my bark, scratching wherever it itched. The sacred cow would scrape her body on my bark, scratching wherever it itched, and the 300,000 gods sheltering inside her would touch me. Who knows? In the end, hacked into pieces of dry wood, burning in the holy fire, I might be made pure. Who knows? In the end, hacked into pieces of dry wood, burning in the early holy fire, I might be made pure, or becoming the buyer for a sinless body, be borne on the shoulders of four good men. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद मुडनाकुडू चीना स्वामी जी। मैं आमंत्रित कर रही हूँ कश्मीरी में पुरस्कृत फारूक फयाज साहब को। At the very outset, I must congratulate all the award winning authors of different titles representing different languages of the country. And the Vice President, who has recently been selected as Vice President of this prestigious National Academy of Letters, and then the various chairpersons of different advisory committees of different regional languages, and the respectable members of the general body, and the eminent writers. And yesterday I made it clear to you people, sir, that whenever we talk of writing or a creative process, to me, as a writer, it seems that it is a dialogue of a writer with his own creative self. The dialogue that is later on defined by the specific linguistic culture, specific language metaphor, and the cultural identity of that very geoclimatic region. At the very outset, I feel immense pleasure to extend heartfelt thanks and gratitude to the National Academy of Letters, Sati Academy, New Delhi, for honoring me with the Best Book Award in Kashmiri language for the year 2022 in the category of literary criticism. The award provides an authentic legitimacy to the literary contributions of writers in the diverse fields of literary specialization. All genuine writers from the
from the day first, nurture the dream to get this honor sooner or later in their lifetime. I feel privileged to be counted among the galaxy of writers and amid this august body of eminent writers who represent various regional and national languages of the country. I find myself truly elevated to the stature of a genuine writer. The Valley of Kashmir, besides its enchanting treasure of vast natural beauty, has a distinction of having served as one of the highest centers of competitive learning in its hoary past. It is the only region in the entire subcontinent that has an honor of possessing an unbroken historical record since abode of historical for 2000 years. Kashmir has been an abode of Sanskrit learning, and this small vale has issued masterpieces in history, poetry, romance, fable, and philosophy. Observed by Sir George Gleason, mentioning that Kashmiris have reasons to be justly proud of the literary goals of the land. Gleason added that Kashmir was, for centuries, the home of the greatest Sanskrit scholars and at least one great Indian religion, that is Shaivism. The written literary tradition in Kashmiri language is almost separated over some 1000 years. Prior to Lalder, it is Shetty Croce's Mahane Prakash, an anthology of some 94 works, which is considered to be the maiden written collection of Kashmiri verse. But from all standards of established literary canons, it is Lalder, the 14th century poet, followed by her younger contemporary Sheikh Nuruddin Rishi, who it is said have laid a well-defined foundation of strong literary poetry with diverse thematic and formalistic experimentation, remaining the predominant mode of creative expression in Kashmiri language. The prose literature of Kashmir in Kashmiri witnessed its emergence in the form of religious translations initiated by role of Christian missionaries by translating pieces of Bible and other allied literature. The structured usage of prose as one of the creative compositions started with the beginning of the progressive writers movement towards around 30s of the previous century, and it was the fictional prose, particularly Afsana, which gained momentum under the impact and influence of progressive writers movement. The other forms of prose literature like drama, novel, travelogue, biographies, essays, and other forms of prose literature, drama, novel, and other literary criticism resumed little attention or focus all through this period. The credit goes to Abdullah Adab, the first progressive poet of Kashmiri, who for the first time by writing a three-volume history of Kashmiri poetry laid the foundation of the tradition of history writing in Kashmir. Taking cue from Adab's literary historical narrative, Avtar Kishan Rahman published his first volume of history of Kashmiri literature, and as promised, the author could not accomplish this process to open to pen down the left out portion of the said literary history. Professor Shafi Shaw, along with his brother Naji Munawar, seriously undertook the job of secreting the history of Kashmir literature. Till date, a number of volumes have been brought up with fresh additions to address the needs of the students and scholars of Kashmiri language and literature. The discipline of literary criticism, which witnessed exemplary growth in other languages, remained unattached in the domain of Kashmiri literary historical narrative. It is this deficiency and paucity of literature, literary criticism in Kashmiri, which guided and persuaded me to focus my attention on the subject. The Zerda, which stands selected for this year's Sahitya Academy Award, attempts to examine the philosophy of Kashmiri literature produced during the span of some 100 years from the standpoint of diverse literary and critical theories. The work in question from the standpoint of that the work in question for the first time takes into account the literary cultures as a tool and analytical apparatus to assess the creative works of prominent and young writers situated over a period of some 100 years. The study is total divorce and disagreement to establish a traditional usage of ornamental language
uses pure analytical mode of expression, which exclusively suits the qualified standards of critical expression. Further, the work in order to offer a systematic and unbroken account and due to pure specific literary trends, behaviors, attitudes, and sensibilities, presents the thematic selection is strictly in tune with the chronological order. Though the literary works of the writers were examined from a standpoint of postmodern critical theory, known as New Historicism, but a modest attempt has been made to evaluate the creative compositions in the light of the regional cultural aesthetics and geolinguistic nicety. The author, besides taking cognizance of internal evidence chosen from the very text itself, seldom loses sight of external agents which play a significant role in the making of any literary composition or the creation. The text, the author, the theme, the style, and the cultural climate all have been put together screen, under strict screening while examining the contributions of some dozen of writers included in the present critical study known as DA. At the end, before I conclude my statement, let me be very honest to express my heartfelt thanks to all my friends, my mentors, particularly Professor Muhammad Zaman Azurza, who has been associated with this prestigious institution for the last 30 years. My friend Professor Shad Ramzan is very much here. He is now chairperson of the Kashmiri Advisory Committee. Then Mansoor Bandhali Saab is here. My friends at Delhi, particularly Gauri Shankar Sahab and the chairperson of the Dogri language, Mohanji Sahab, and then the Veena Ji Sahiba. And that gentleman, I'm very sorry I have forgotten your name. Please, this, yes, this. I'm sorry, I'm sorry. And last but not least, I am indebted, whatever I am today before you. I have started my career as a simple school teacher. On one of the occasion on Eid, I had no penny to celebrate Eid. This is true. But it was my spouse and my wife, who she is seated here. She sold her, she sold her ring, golden ring, just to give a very comfortable feel to the children that they are at the comfortable hands. That time I was working All India Radio. I was having some financial crunch that time. But on this very auspicious occasion, I want to express my special thanks to my spouse and my children who are at home so that I can document my inner feelings and I respect the love and the respect her dignity that she has showered on me. Very thankful. थैंक यू फारूक फयाज साहब। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ कोंकणी में पुरस्कृत माया अनिल खरगड़े जी को। नमस्कार। इस सत्र के सम्माननीय अध्यक्षा महोदय जी, यहाँ उपस्थित मेरे साहित्यकार भाइयों बहनों, सबको मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले साहित्य अकादमी ने 2022 साल का एक सर्वोच्च पुरस्कार मुझे प्रदान किया है, इसलिए मैं साहित्य अकादमी को धन्यवाद करती हूँ। पिछले लगभग 45 सालों से मैं साहित्य की सेवा करती आई हूँ। साहित्य के सभी प्रकार जैसे कि कथा, कविता, लेख, उपन्यास, प्रवास वर्णन, अनुवाद और बाल साहित्य लिखती हूँ। अब तक मेरी लगभग 47 किताबें प्रकाशित हुई है। मेरा तीसरा उपन्यास जो सीताजी पर भूमि कन्या यानी भूमि कन्या लिखा है, वो जल्दी ही प्रकाशित होने वाला है। इसके अलावा मेरी और बहुत सारी किताबें प्रकाशित होने वाली है। कुछ
कुछ अनुवाद प्रोजेक्ट पर भी मैंने लेखक साथियों के साथ काम किया है, जैसे कि कर्नाटक के बसव समिति की वचने, ऋग्वेद और बाइबल, कोंकणी विश्वकोश और मराठी कोंकणी शब्दकोश में भी मैंने योगदान दिया है। अब मेरा पुरस्कार प्राप्त उपन्यास के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। अमृतवेल ये मेरा पहला उपन्यास है। अमृतवेल का मतलब है अच्छा समय, ब्राह्म मुहूर्त। इस उपन्यास की नायिका विधवा सीताबाई अपने जीवन में बहुत संघर्ष करती है और आखिर उसके जीवन में उसकी पोता पोती अमृत वेला यानी अच्छा समय लाती है। इस उपन्यास में नायिका के साथ घर की अन्य औरतें भी बहुत कष्ट उठाती है, इसका भी चित्रण मैंने किया है। उस जमाने में समाज ने विद्याभ्यास यानी एजुकेशन को बहुत महत्व दिया था। उस समय आज की तरह ज्यादा पाठशालाएं नहीं थी, जो भी थी वो पोर्टुगीज में थी। उसमें ज्यादातर बड़े बड़े घर के बच्चे ही पढ़ते थे। कुछ जमींदार जिन्हें गोवा में भाटकार कहा जाता है, वे अपने घर में महाराष्ट्र से या बेलगावी से मास्टर जी को बुलवाकर अपने घर में रखते थे और मास्टर जी उनके घर के और आस पड़ोस के बच्चों को भी पढ़ाते थे। इस तरह प्राथमिक शिक्षा तो होती थी, मगर उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को गोवा के बाहर मुंबई या बेलगावी जैसे शहरों में जाना पड़ता था। मेरे इस उपन्यास की नायिका सीताबाई को लगता है उनका बेटा भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए, पर उनका बेटा पढ़ाई के बजाय स्वातंत्र संग्राम में भाग लेता है, जमींदारी के कामों में अच्छी तरह से काम संभालता है। सीताबाई अपने मीठे स्वभाव से घर के लोगों का, ज्यादातर औरतों का मन जीतती है। उसकी देवरानी उसे कहती है, सीताबाई तुम्हारे जीवन में भी अमृत वेला आएगी। सीताबाई की बेटी को दो बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। सीताबाई अपने पोता पोती को दिलो जान से प्यार करती है। अपनी पढ़ाई अपना पढ़ाई का सपना पोता पोती से साकार करवा कर रहूंगी ऐसा मन में ठान लेती है। बच्चे भी बड़े होशियार होते हैं। पढ़ाई और छोड़ के शहर में रहने के लिए आती है, जहाँ उन्हें बहुत बड़ा जीवन संघर्ष करना पड़ेगा। खाने पीने की दिक्कत होती है, तब सीताबाई गोदड़ी यानी पुरानी साड़ियाँ जोड़कर रजाई बनवाने का काम शुरू कर देती है। उसी पैसे से वो पोता पोती को पढ़ाती है। पोता ग्रेजुएट होकर बैंक में काम करता है, तो पोती डॉक्टर बनने का सपना देखती है। यह जानकर सीताबाई बहुत खुश होती है। तभी उसकी देवरानी आके उससे फिर बोलती है, सीताबाई अब तुम्हारे जीवन में अमृत वेला आ गई है। गोवा पर 450 साल पोर्तुगीज राज्य करते थे। उन्होंने कोंकणी भाषा को नष्ट करने का बहुत प्रयास किया, पर गोवा की जनता जो अपनी भाषा को नष्ट नहीं होने दिया। साहित्य रचना बंद नहीं की। इस प्रदेश में कोंकणी व्यक्ति जहाँ गोवा के बाद जहाँ कहीं गए हैं, उन्होंने वहाँ की लिपि, वहाँ की भाषा, इसमें अपना साहित्य रचना कर दी। शनै विभाग यानी वामन वर्ग बालालकर जैसे महापुरुष ने कोंकणी भाषा के लिए बहुत कष्ट उठाए। उसका ही नतीजा है गोवा स्वतंत्र होने के बाद कोंकणी भाषा पूरी तरह से उभरने लगी है। इस 61 साल के छोटे से कालावधि में कोंकणी लेखक भारतीय लेखकों के पंक्ति में बैठा है। एक तरह की सम्मान वो ज्ञान की आदरणीय मैडम
देल गेल तामपत्र में से हुनक दस्तखत से देखल अछि। तदुपरांत हम आभारी छी अकादमिक वर्तमान अध्यक्ष श्री माधव कौशिक जी के प्रति, उपाध्यक्ष मैडम शर्मा जी के प्रति, साहित्य अकादमी के सचिव के श्रीनिवास राव जी के प्रति, संगे साहित्य अकादमी के प्रति जे हमर कविता संग्रह पेन ड्राइव में पृथ्वी के पुरस्कृत क हमरा एहिठाम ठाढ़ हेबाक पात्रता देलक। एहि के संगे हम साहित्य अकादमी के जतेक कर्मचारी अधिकारी लोकनि छथि तिनको प्रति आ हम अपन भाषा के परामर्शी मंडल आ संयोजकक प्रति कृतज्ञता प्रकट करैत निर्णायक मंडल सभक प्रति धन्यवाद ज्ञापित करैत छी। एकर बाद हम अपन वक्तव्य हिंदी में राखी छी, कारण एतऽ बहु भाषा भाषी छथि तो सबके हमर बात बुझबा में सुविधा हेतनि। महोदया, इस समय जब मैं यहाँ आप सभी के समक्ष खड़ा हूँ, ठीक उसी समय में रूस के अनेक बम गोले यूक्रेन के विभिन्न नगर शहर में गिर रहे होंगे। प्रतिकार में यूक्रेन के सैनिक भी रूस के जान माल का नुकसान कर रहे होंगे। गाजा पट्टी के चारों ओर से उठता धुआं संपूर्ण विश्व परिवेश को अपने आगोश में ले रहा होगा। आर्मेनिया और अजरबैजान के सैनिक नारदोस काराबाग की पहाड़ी को सबसे बड़ा शमशान बनाने पर तुले हुए हैं। चीन और उत्तर कोरिया के शासक न जाने कौन सा रक्ति आसक्ति रखे हैं कि जिससे संपूर्ण मानवता त्राहिमाम कर रही है। तिब्बत सहित अनेक देश स्वतंत्रता का सुख भोगने से वंचित हैं। अमेरिकी ऋण और धौंस के आगे अनेक छोटे छोटे देश विवेकहीन निर्णय लेने हेतु विवश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ एक तरह से पंगु बन गया है। भारत के चारों ओर के देश भी अनेक कारणों से अशांत हैं। श्रीलंका, अफगानिस्तान, बर्मा, पाकिस्तान, तिब्बत, बांग्लादेश सहित नेपाल, भूटान आदि सभी देश संकट से जूझ रहे हैं। भारत के भीतरी हालत को भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है। धार्मिक उन्माद और जातीय संघर्ष चरम पर है। समरसता की भावना घटी है। हम लोगों को जिस तरह से प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए थी, उसमें हम लोग विफल हो रहे हैं। वर्तमान शिक्षा पद्धति से आविष्कार कम और बेरोजगार अधिक नजर आ रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी केवल डिग्री बांटने की संस्था बनकर रह गए हैं। व्यापारियों ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर कब्जा कर लिया है। नदी के घाट सिकुड़ गए हैं, तो वहीं तालाब और कुएं जैसे चीजें बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं। जितने पेड़ लगाए नहीं जाते, उससे अधिक तो काटे जा रहे हैं। प्रकृति के रुदन को अनसुना कर रहे हैं हम लोग। कोरोना बीमारी के भीषण त्रासदी झेल चुकी दुनिया इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? जिस समय अस्पतालों का निर्माण होना चाहिए, हम बम बारूद और बंदूक की फैक्ट्री लगा रहे हैं। जीव जंतु और वनस्पतियों की अनेक प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। अनेक भाषा बोली नष्ट प्राय हो गई हैं। हमारी भाषा जो सीता की भाषा है, विद्यापति की भाषा है, उस पर भी भीषण संकट छाया हुआ है। प्राथमिक कक्षा में मैथिली की पढ़ाई नहीं होती। इस भाषा को राजकीय दर्जा प्राप्त नहीं है। अपनी ही जमीन पर मैथिली तिरस्कृत होती जा रही है। हमारी भाषा मात्र कहने के लिए अष्टम अनुसूची में शामिल है, किंतु न तो हमारी भाषा में आकाशवाणी है और न दूरदर्शन है। सरकारी पुस्तकालयों में मैथिली की पुस्तकें नहीं मिलती। विज्ञापन के अभाव में मैथिली की पत्र पत्रिकाएं 8-8 आंसू रोते हुए अंततः बंद हो जाती हैं। उद्योग विहीन मिथिला के एक हाथ में ट्रेन का पौदान है, तो दूसरे हाथ में अपने बच्चों का भविष्य। पलायन हमारी भूमि की नियति बन चुकी है। इस सब के बावजूद
मैथिली के साहित्यकार अपना पेट काट कर पुस्तक छपवा रहे हैं। हमारी भाषा में साहित्य की समृद्ध परंपरा रही है। सांस्कृतिक रूप से भी हमारी भाषा भूमि सबल रही है। लेखन और प्रकाशन हमारी आदिम परंपरा है जो कभी नष्ट नहीं होगी। विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल स्थिति में ढालने के लिए संघर्ष करना हमारी आदत है, जीवनचर्या का हिस्सा है। मैं भी इसी परंपरा से निकला हुआ एक कवि हूँ, लेखक हूँ। अभाव के बावजूद लिखने का स्वभाव नहीं छूट सका। नौकरी पर नौकरी छूटती गई, परंतु लिखना नहीं छूटा। लिखते समय सदैव इस बात का ध्यान रहा कि क्या लिखूं, क्यों लिखूं, किसके लिए लिखूं, रण में रहूं या चारण हो जाऊं। मैंने जनता के लिए लिखना पसंद किया, उनकी आवाज बनने को अपने लेखन की सार्थकता मानी। यह जनता हमारे मिथिला की है, हमारे देश की है, इस संपूर्ण विश्व की है। मेरे लेखन की परिधि में सदैव संपूर्ण पृथ्वी रही है। आज यह पृथ्वी अनेक प्रकार के संकटों से जूझ रही है। न सांस लेने योग्य शुद्ध हवा है और न पीने योग्य शुद्ध पानी। संबंधों का निर्वहन लगातार कठिन होता जा रहा है। संयुक्त परिवार के सभी तंतु बिखर गए हैं। अधिसंख्य लोग अवसादग्रस्त जीवन जीने के लिए अभिशप्त हैं। सभ्यता संस्कृति पर हो रहे चौतरफे हमलों से किसका हृदय आहत नहीं है। मेरी कविता का मुख्य विषय यही सब बनता रहा है। मैं मनोरंजन के लिए या किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं लिखता। बचाना मेरा उद्देश्य है और इसीलिए पृथ्वी को बचाने का उपक्रम करते हुए कभी प्रेम तो कभी प्रतिकार लिखता हूँ। प्रेम और प्रतिरोध मेरी कविता का मूल उत्स है। विडंबनापूर्ण स्थितियों से लड़ना, थकी हारी जनता को लड़ने के लिए प्रेरित करना मेरी कविता का ध्येय रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे बाद की पीढ़ी अर्थात युवा पीढ़ी ने मेरे धार और विचार को अपना पसीना और अपनी स्याही दी है। मैथिली साहित्य में अभी जितने कवि सक्षम और सक्रिय हैं, उतने वर्तमान में अन्य किसी भाषा में नहीं हैं। इस कारण से भी मैथिली कविता की सघन व्याप्ति हुई है। वैश्विक कविता के केंद्र में यदि अभी भारत है, तो निसंदेह इसमें मैथिली कविताओं का योगदान महत्वपूर्ण है। मैं साहित्य अकादमी के प्रति पुनः आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने विश्व कविता में मैथिली कविता के योगदान को प्रमाणित करने के लिए मेरी कृति को पुरस्कृत कर समुचित आधार एवं अवसर दिया। मुझे याद है जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था, उसी समय से कुछ कुछ लिखने लगा था। 10वीं तक आते आते मेरे पास 100 से अधिक कविताएं हो गई थी। इन कविताओं में भी आम आदमी के सुख दुख की ही अभिव्यक्ति थी। उस समय मैंने एक नाटक भी लिखा था वर्ष 1984 में, जिसका मंचन भी हुआ था। इसके बाद से मेरे लिखने की आदत बढ़ने लगी। इस कारण से मेरे माता पिता चिंतित रहने लगे। उनकी चिंता का सबब मेरा कैरियर था, परंतु मैं इन सब से निष्क्रिय था। मैं सिलेबस से अधिक साहित्य की किताबें पढ़ता था, मगर उस समय लेखन हिंदी में होता था। इसका कारण प्राय यह था कि मेरे पिता सेना में थे और उनकी पोस्टिंग देश के विभिन्न जगहों पे होती रहती थी। पालन पोषण और अध्ययन आदि सैन्य परिवेश में हुआ। आरंभिक जीवन का अधिकांश समय मैंने मिथिला से बाहर बिताया। घर की भाषा यद्यपि मैथिली ही थी, मगर मैं मैथिली साहित्य से लगभग अपरिचित था। स्नातक करने की अवधि में मिथिला में रहने का अवसर मिला, तब मैथिली साहित्य का साहचर्य प्राप्त हुआ। अब मेरे पास दो विकल्प थे, हिंदी में लिखना जारी रखूं या मैथिली में लिखूं। बहुत दिनों तक वह पोह में रहा। मैथिली साहित्य पढ़ने में मन खूब लगता था, परंतु लिखने में समस्या होती थी। हिंदी का मोह भी बांधे हुए था। उसी कालखंड में यात्री नागार्जुन दरभंगा आ गए थे। उनसे नियमित भेंट करने जाया करता था। मैथिली के अनेक मूर्धन्य लेखकों से भी संवाद स्थापित होने लगा था। अपनी रचनाएं उन्हें दिखाया करता था। उनसे मिले सुझावों का अनुपालन भी करता था। मेरा लेखन अब परिष्कृत होने लगा था।
पत्र पत्रिकाओं में छपने लगा, मंचों पर भी आना जाना लगा रहा। विगत 30 वर्षों की लेखन यात्रा में अनेक मोड़ एवं पड़ाव आए हैं। गीत, संगीत और नाटक में रुचि थी। मंचों पर गीत गाता, नाटक खेलता। रंग कर्म तो अभी भी नहीं छूटा है। लेखन, गायन और रंग कर्म, इन तीनों से एक साथ तादात्म्य बनाना सरल नहीं था। तो पहले गायन और बाद में नाटक कम होते चले गए, परंतु लेखन अपनी गति से चलता रहा, जो आज भी जारी है। परंतु इन सब के अतिरिक्त एक बात और हुई। मिथिला और मैथिली के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करना उचित जान पड़ा। मैथिली भाषा के राष्ट्रीय सम्मान और संवर्धन के लिए चलने वाले आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया। हमारी भाषा मैथिली अनेक षड्यंत्रों का शिकार थी, अभी भी है। अकादमी में स्वीकृत नहीं थी, अष्टम अनुसूची में भी नहीं थी, लेकिन लेखक और अभियानियों के सहयोग से आज हमारी भाषा को ये दोनों स्थान प्राप्त हैं, अकादमी अनुसूची में भी। इस अवसर पर मैं मैथिली के उन लेखकों और अभियानियों का इस अवसर पर मैं मैथिली के उन लेखकों एवं अभियानियों के समक्ष नतमस्तक हूँ, जिनके अतुलनीय योगदान से हमारी भाषा को यह गौरव प्राप्त हुआ है। किंतु खेद है कि शास्त्रीय भाषा होने की सारी अर्हताओं के बावजूद क्लासिकल लैंग्वेज में हमारी भाषा मैथिली को स्थान नहीं दिया जा रहा है। विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक मैथिली भाषा के साथ किए जा रहे इस विभेद से मैं आहत हूँ। मैथिली लेखक के रूप में मैंने सदैव अपने दायित्वों का निर्वहन करने का प्रयास किया। मैथिली कविता के चाषवास को और अधिक चौरस और उर्वर बनाने के लिए तत्पर रहा हूँ। विषय का अन्वेषण, कहने का ढंग आदि में प्रयोग करता रहा हूँ। अन्य भाषाओं का अनुकरण करने की बजाय अपनी मौलिकता पर केंद्रित रहा हूँ। विचार से कभी समझौता नहीं किया। इन्हीं कारणों से निजी जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई, परंतु विचलित नहीं हुआ। मध्यम मार्ग का अनुसरण या समझौतावादी कभी नहीं हुआ। लेखक को ऐसा होना भी नहीं चाहिए, किंतु आजकल देख रहा हूँ एक अलग तरह का लेखक समाज आ रहा है। इनके लेखन में जाति धर्म का विद्वेष स्पष्ट दिखाई देता है। विद्वेषपूर्ण लेखन से कोई कैसे लेखक हो सकता है? साहित्य सदैव राजनीति से आगे चलता है। आज क्यों यह पिछलग्गू बना हुआ है? इस पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। समकालीन मैथिली कविता इन सब मामले में भारतीय भाषाओं की कविताओं से आगे की राह पकड़े हुए है। यह अलग बात है कि अभी हम लोगों को इस लेखन पर अन्य भाषा भाषी लोगों का पर्याप्त ध्यान नहीं गया है। इसका कारण यह है कि हमारी भाषा का साहित्य बहुलांश में अनुदित नहीं हो रहा है। इस अवसर पर मैं उपस्थित सभी लेखकों से आग्रह करूंगा कि वो मैथिली साहित्य का अनुवाद करने का प्रयास करें और पढ़ें भी। हमारी भाषा साहित्य किसी को निराश नहीं करेगी। इन सब के बावजूद अंत में मैं कहना चाहता हूँ अपनी कुछ तकलीफें जो आप तमाम लेखकों की ओर से भी है। इन सब के बावजूद मुझे कभी कभी दुख होता है कि देश का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने से क्या लाभ यदि ट्रेन की एक टिकट तक हम कंफर्म नहीं करवा सके। अर्थाभाव से जूझ रहे लेखकों को न कोई पेंशन है और न ही उनकी पुस्तकें खरीदने की कोई योजना। स्वास्थ्य बीमा तक से महरूम है ये लोग। क्या इन लेखकों को घूमने फिरने के लिए रियायती दर पर टिकट भी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है? अकादमी सहित भारत सरकार को इस पर विनम्रता से विचार करना चाहिए। प्रतिष्ठा तो दी जाती है, किंतु प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए भी व्यवस्था दी जानी चाहिए। ये बात मैं अपने लिए नहीं वरन बृहत लेखक समाज की समस्याओं को देखते हुए कह रहा हूँ। सभी भाषाओं में अभावी लेखक भरे पड़े हैं। हाशिए लिखने वाले लेखक स्वयं हाशिए पर हैं। साहित्य अकादमी को इन सब का भी संज्ञान लेना चाहिए। लेखकगण जब तक बचे रहेंगे, नागरिक सभ्यता पर संकट नहीं आने देंगे। अंत में पुनः आप सबों का आभार। बहुत बहुत धन्यवाद अजित आजाद जी। मैं आमंत्रित हूँ मलयालम में पुरस्कृत एस थॉमस मैथ्यू जी को।
Chairperson, Honorable Vice President of the Science Academy, my fellow writers and friends. I express my gratitude to Science Academy for the recognition and award bestowed upon me. I was not born and brought up in a family which did have any social background to prompt me to become a writer. However, my father was a reasonably good reader and he had great respect towards me. He had a venerable guru who used the world class. He opened our eyes to look beyond textbooks. Uh, but I remember that my reading in this period was without any discrimination. Things changed drastically during the college days. I began to equip myself to ask questions to books and seek exact answers from them. This habit made me realize that I was not sent to this world with the faculty to experiment with novels, poetry, or drama. I considered myself fortunate for being aware of what I was. I was not. It is always good to have this awareness, who you are and who you are not. That was an era when we could see how criticism could change future we had. And it was a period which rejected the misconceptions that criticism was first created. If we go deep into the human nature, we can see that the critical faculty of the mind is a differential of human Homo sapiens. The first cry of a newborn baby coming out of the froziness of the mother's womb is its declaration that how hostile is the psyche. Attempts of an offspring to twins around the mother's body and clinging on to her dress is his affirmation that the umbilical cord is never broken. The primary function of language is the same affirmation. Language is inseparable from the humanness of man, and that is why man is defined as language animal. This could be the most meaningful definition of man. Man becomes man only within the language. It is primarily what Heidegger defined language as the house of being. Being means my being myself. Without language, man is not man, but is only a two-legged animal. My endeavor is not to highlight the importance of language. My point is that the origin and functioning of language can be traced back to the critical faculty of human mind. When we use a word to denote the experience or a thing, immediately that experience or thing disappears, and it is displaced by a cortex. This is why the symbolists believe that when you name a thing, that sensation
special gift of arranging everything in a cause and effect pattern. When the urge of ideation that is fundamental to the human mind is directed towards literary experience, literary criticism is born. Nothing more and nothing less also. Man, by being man himself, by nature, puts a big question mark why before each and every experience. How can we say literature should be spared from asking this question? When we say criticism is not at all necessary, we mean that we want so much less a human being. Are we not obliged to know at least so much? When we begin to know, we want everything unknown to be brought into the sphere of the known. But omniscience is an increasing, there is some shaping with it, reducing impossibility. Therefore, man's quest becomes an incessant journey. It never ends to a final destination. Everything humanity acquired and achieved can be made helpful for this journey. What Harandu said, nothing human is alien to us, is a maxim for the literary critic also. During this journey, man becomes the creator of values. The unending perplexity surrounding man's life becomes hopeful, depending on the values he had embraced. Life becomes pathetic or tragic when man fails to oppose these values. When the literary critic began to evaluate the literary work with this value system as his point of departure, literary criticism in its ultimate end becomes asking the simple question, who is man? Please don't misunderstand that I am claiming that I am doing this when I am engaged in criticism. But I wish to say that this is how I used to do it. When a work is completed, I feel either pathetic as it would be below par than what I intended to be now. But out of this sense of failure, I gather strength and energy to attempt another work. Is there any writer who could claim that he had produced his masterpiece? Masterpiece is a celestial being in the horizon of imagination. If you put your destination horizon, you are bound to know that you cannot reach there. But what should not curtail, that should not curtail the journey. Our great poet Kumar Nasan wrote, this tiny creature, the human being, this tiny creature flies aiming stars. May I claim to be one among these tiny creatures flying towards stars. Knowing, of course, this destination is far away and above for my power and strength. This prestigious award bestowed on me by the Science Academy is a path for me to move forward and I aim high. The work selected for this award, Asanta Sridayama, which means Sida's journey of life according to Ashan. It's a critical study of Kumar Nasan's Sindhavastaya Sida. Sida possessively form. This poetical work has passed a century and many a study and critical evaluation have been published. Almost all major critics in Malayalam have contributed much in exploring the meaning and aesthetic value of this great work. But as Oscar Wilde observed,
criticism deepens the mystery of the work of art. Asanta Sidayanam was possible from the feeling that there are still new questions to be asked about this work. I don't have any pretension that I am offering the last answer to the last question. My humble claim is that I could create a small space for dialogue. That is enough for me. I think it is better not to write than writing a universally acceptable book. Thank you. Thank you, Shri M. Thomas Shri M. Thomas Matthew जी. मैं आमंत्रित कर रही हूँ मणिपुरी में पुरस्कृत कोइजम शांतिबाला देवी जी को. Namaste. Good afternoon, everybody. I extend my warm greeting to all present here, Honorable Vice President of the Saite Academy, recipients of the Saite Academy, writers, scholars, distinguished invitees, and media persons. I am indeed delighted to receive the prestigious Saite Academy Award for the year 2022. I also extend my heartfelt gratitude to Sahitya Academy for the recognition given to me with the Bal Sahitya Puruskar Award conferred to me in 2011 for my work Tal Taret, Several Pieces of Bread, a play for children. Today, I am being honored with the Sahitya Academy Award for my poetry anthology titled Lairolnu. In English version is Core. And this has been a dream come true for me. Being a lover of poetry, the beauty within poetry has always mesmerized me. I believe, I believe poetry is the sweetest rendering of the heart, and poetry provides a connection between souls. In poetry, I find devotion, worship, sacrifice, and faith. In my journey as a poet, the Sahitya Academy has played a huge role. The poet meets organized by the Sahitya Academy all over India has provided me the platform to widen my horizon, and this has indeed opened the doors for me, ultimately leading to the realization of this childhood dream for mine. In my early years, I had been in awe of the huge library collection which belonged to my writer, Uncle Koijam Dhiren. These books that I read as a young girl from his library has inspired me to dream of being a writer one day. Today, I feel I have realized this dream. My association with Sahitya Academy, Manipur State Kala Academy, and literary organization of Manipur, such as the Cultural Forum of Manipur, Sahitya Parishad Manipur, Manipuri Literary Society Imphal, Naharol Sahitya Premi Samiti Imphal, and others literary organizations have opened my eyes towards the beauty of literature and the role it plays in society. Being in the profession of teaching Manipuri literature has brought me closer to poetry and literary criticism being a vital part of the teaching literature.
sometimes it becomes too monotonous. During such phases, poetry writing provides an outlet for me to invigorate myself, and this enables me to continue writing poems. Indeed, I feel very fortunate to be the fifth Manipuri woman writer to receive this prestigious award. There are many women writers as well as many women organizations such as LICOL who work for the welfare of women. I am also an active member of this organization. Women writers approach this field of writing with excellence, and I also have to embody this excellence within myself and face it with strength. One has to break through opposition from all directions and stand strong to face them all. Men have been voicing women's concern for a long time, and now it is time for us to voice our own. And this thought has been taken into consideration by the STEM Sahitya Academy, which has pleased me beyond words. To work the promotion of literature is to work for the welfare of human beings. Irrespective of gender, men and women must work for the promotion of literature. As a woman, one must utilize one's womanly power and the strength to let the fire of literature burn bright. I hope I get the strength to continue promoting literature through the prayers and the support of you all. We often hear people say that literature has no role to play in society and that it can bring no impact. But literature is art, and the art is what defines us. Art is our identity. Renowned Manipuri poets such as Sauba, Kamal, Angahal follow in the footsteps of the great folk poets such as Pena singers of Manipur. Similarly, as a Manipuri woman poet, I am following in the footsteps of these great Manipuri poets and Adi Kavi Valmiki. In life, one will come across folk parts with many options to choose. However, it is my earnest desire to continue writing poetry as long as this heart beats. I would like to wind up my speech with this short quotation from Robert Forst's poem, "And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep." Thanking you. Namaskar. बहुत धन्यवाद कुसुम शांतिबाला देवी जी। मैं आमंत्रित कर रही हूँ मराठी में पुरस्कृत प्रवीण दशरथ बांदेकर जी को। Dignitaries on the desk, my contemporary writers and poets across the country who have been honored with the Sahitya Academy Award, and the audience who made it to attend the function. Friends, the place where we are born, its culture and transformations taking place over the years influence our writing. As far as I am concerned, my sensibility has been deeply rooted in my soil. I have spent my life in the hilly terrain of Konkan region. It is the southern end of Maharashtra. Fed up with the Portuguese atrocities, my ancestor, my ancestors migrated from the neighboring Goa to this hilly region of Konkan. Konkan also has its unique culture
as far as the dialects, folk arts, food, festivals, and deities are concerned. I think the culture of this region has greatly influenced my. I have used the forms of folk arts like Dashavatara or puppetry and Chitrakathi in my narration and plots of the novels. On this occasion, I think it is necessary to say a few words about my Sahitya Akademi award-winning novel Ujvya Sondecha Bahulya. It means puppets with the tongue at the right. Broadly, in this novel, I have dealt with the problems caused by the politics of identity issues of our times. This has fragmented our society into different sectarian groups of caste, religion, and culture. Unfortunately, the conductive atmosphere required to encourage these groups to move beyond these narrow sectarian views also does not exist. Consequently, disdain, distrust, hatred, intolerance has been growing by leaps and bounds. And the most terrible part of the story is intellectuals, writers, artists, thinkers who are supposed to use their mediums effectively and empower society to move to the right direction are either indifferent to the reality or they have forgotten the power of their mediums. My novel is an attempt to comment on this chaotic situation. A puppeteer is the central character of this novel. Enraged by his art of naming puppets after gods and goddesses, the so-called saviors of culture beat him mercilessly. The family of a poor puppeteer gets terribly frightened. This incident leaves a deep impact on them, and slowly the whole family gets ruined. I was terribly shocked to see this incident happen in reality. This could be considered as an illustration of what is happening around us. But during these last few years, the winds of hatred are blowing wildly. At regular intervals, attempts are made to terrorize people in the name of gods, religion, and culture, as if undeclared war is wa- undeclared war is waged against the common people, the Bahujan people. To establish the cultural hegemony of a privileged few, attempts are made to discard the culture of tolerance who has been preserved by common people for centuries. The poor folk artists who try to preserve these folk arts and somehow try to manage their survival also suffer the blow of this fanatism. This is certainly a disturbing reality for any sensible person. Naturally, in that disturbed state of mind, what had happened before my eyes was put on the paper by me. Initially, it had no form. It was neither a novel nor a poem. It was not even a diary. It was just an attempt to escape from that restlessness. What a man like me, who is endowed with an additional finger of writing, could do except writing about it. Conventional narrative techniques of fiction, established forms of storytelling would be inadequate to bring out my concerns for the inner core. I was compelled to explore a new structure for my novel. I had started this novel with the story of a folk artist, that is a puppeteer, and in a process, I realized that the form of the puppet show, would serve my purpose. But during this period, some veterans, social workers, thinkers, and writers were killed in Maharashtra and nearby Karnataka. It became clear that the forces which were trying to revive their cultural hegemony were behind these killings. I realized that the forces which ruined the life of the poor puppeteer
have now become so powerful that they have begun to interfere the public life. Attack on Puppeteer had triggered me to think over the plight of the common people ruined by the violent cultural politics. In one of our rounds of discussion, once Comrade Govind Pansare remarked that we are all suffering from amnesia. We are not able to understand what is our position and what are we doing and who are lured us and disgraced us from our path. I found his statement very loaded one. I sensed that my restlessness found a way. Then the description of mass epidemic of blindness afflicting everyone in Portuguese novelist José Saramago's blindness and the mass amnesia of our own identity in our time began to jostle against each other in my mind. The outer world became very intimidating due to a narrow sectarian politics of identity. Even the prominent figures in our society were in a fix. The self-centered approach of the intellectuals and the tolerance and terror evident in even negligible incidents sounded terribly alarming to me. This certainly causes a restlessness in a writer. All these things, knowingly or unknowingly, were getting absorbed in this novel. However, it is difficult to state the central theme of this novel. Several themes originating from our present life are spread across the novel. This is the novel that tries to explore the possibilities of the content. Yet, one can certainly find a central theme that binds several themes together. The identity we carry while living, and the loss of identity or the merger of identity with the other identities, and the degradation of the intellectual class form the core of this novel. Instead of fighting against the establishment, the intellectuals are pretending to be suffering from amnesia. We are experiencing the horrible consequences of their indifference. To some extent, the puppets mentioned in the novel are associated with the traditional puppet show in Konkan, but at the same time, I would not call them the replicas of these puppets. Some of these puppets have trunks, and some of them create an illusion of having the trunks. In a course of reading, the readers of this novel would come across several kinds of puppets. Readers are supposed to play this game by collecting different segments of the show scattered throughout the novel. That would help them to understand what the writer aims at. I have full faith in the ability of readers to read between the lines and interpret this novel. So friends, I believe that a writer is associated with his time, with the people he comes across, and even with their past, present, and future. I must gratefully acknowledge the fact that a writer like me has sustained against all odds because of this concern. On this occasion, I take this opportunity to say it publicly. I am grateful to my fellow travelers, Professor Gurunath Dhuri, Vasant Sawant, N. Pednekar, Jayant Pawar, Kavita Mahajan, also my contemporary writers, my colleagues, and my wife Shirish, who stands firmly with me in all the situations. I thank Sahitya Academy for this award and for giving this opportunity to share my views with you. Thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra. बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रवीण दशरथ मांदेकर जी। अब मैं नेपाली में पुरस्कृत के बी नेपाली जी को आमंत्रित करती हूँ अपनी बात रखने के लिए।
साहित्य अकादमी को नमन करता हूँ। साथ ही साहित्य अकादमी के कार्यकर्ताओं तथा मीडिया को जय भारत जय गोरखा मंच और प्रेक्षागृह में उपस्थित जन में नमन मेरो पट्टी जन्मा सुजलाम सुफलाम मलजय शीतलाम स्वस्थ श्यामलाम वंदे मातरम। तिमी हाम्री माँ हे माँ चरम वंदे मातरम। छोड़ो म पहाडको म हुँ नेपाली वीर गोर्खाली देशको निम्ति मरि मेट्ने विश्व युद्ध फर्काउने म हुँ वीर गोर्खाली म हुँ नेपाली। ज्ञान विवेकमा अघि बढ्ने शिखर चढ्ने म हुँ नेपाली वीर गोर्खाली म हूँ नेपाली। इतने कहने के बाद मैं अपना जो वक्तव्य है उसको पढ़ रहा हूँ। महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जी की मुना मदन खंड काव्य से प्रभावित होकर सन 1955 और 56 से साहित्य में लगाव हुआ और कुछ रचनाएं लिखने लगा। तो उस वक्त की रचनाएं सन 1960 एवं 65 से कई पत्र पत्रिकाओं में और कई प्रकाशन संस्थाओं से पुस्तकें प्रकाशित होने लगी। तो पाठकों से प्रेरणा और प्रोत्साहन पाकर साहित्य में पूर्ण रूप से लेखन कार्य में जुट गया और खूब लिखने लगा तथा साहित्य ही साहित्य को जन्म देता है कि भावना से प्रेरित होकर मैंने सन 1961 से साहित्यिक त्रैमासिक पत्रिका बिंदु का प्रकाशन आरंभ कर दिया। तो अभी तक चल रही है, किंतु उस समय मेरा जीवन संघर्षमय था। तब बेटी सहित 3 प्राणियों के जीवन निर्वाह के लिए संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते रहने के फलस्वरूप संघर्षमय जीवन ही मेरा प्रेरणा का स्रोत बना और साहित्य में अग्रसर होता गया। भाषा तो ज्योति है कि भावना में बहता गया तथा मातृभाषा नेपाली और राष्ट्रभाषा हिंदी के सेवा में लग गया और दोनों ही भाषाओं में कमोबेश लिखता गया, क्योंकि साहित्य और मातृभाषा नेपाली और राष्ट्रभाषा हिंदी की सेवा में लग गया और दोनों ही भाषाओं में कमोबेश लिखता गया, क्योंकि साहित्य देशातीत युगातीत है, इसलिए साहित्य समाज का प्रतिनिधि है तो साहित्य का मार्गदर्शक भी है। क्योंकि इस संदर्भ में महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जी कहते हैं, साहित्य में सर्वश्रेष्ठ पुरुष वही है जो राष्ट्र के हृदय में सबसे तीव्र होकर बैठता है। इसी संदर्भ में हमारे साहित्य के महाकवि बाल्मीकि भी यही कहते हैं, एवं विधासु सकलासु कलासु परजाम, अर्थात कवि बाण के अनुसार सकल कला में ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है जिसकी गणना न की गई हो। जो भी हो, काव्य अथवा साहित्य में साहित्यकार मानवीयता को अंगीकार करते हुए साहित्य सृजन करते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह सत्यम शिवम सुंदरम की धारा में प्रभावित होकर, इसीलिए कवि भारतेंदु जी की कथन निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल दिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ये के सुर की भावना में मैं अपनी मातृभाषा नेपाली की सेवा में समर्पित हो गया। क्योंकि साहित्य के महारथी हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, संपूर्ण मानव समाज को सुंदर बनाने का साधन ही साहित्य है। इसी आधार पर साहित्य की धारा में कमोबेश बढ़ते जाने के परिणाम स्वरूप सन 1961 में लामडिंग रेलवे इंस्टीट्यूट के रंगमंच के लिए हत्यारा एकांकी लिखा और मंचस्थ भी हुआ। हत्यारा एकांकी की कथा वस्तु थी, निर्धन को धनी साहूकार वर्ग कुचलते हैं, गरीब को जोक की तरह चूसते हैं। गरीबों का श्रम धन संपत्ति ही नहीं, उनकी स्त्री जवान बेटियों पर भी नजर डालते हैं। नारी अस्तित्व से खिलवाड़ करते अमानुष बन जाते हैं, मानवता को खो जाते हैं। तो ऐसे दरिद्रों को शिक्षा अर्थात
सबक सिखाने के लिए दंड हेतु कथा पात्र उसका संहार करता है। आगे से ऐसा न हो का ज्ञान दर्शाते हुए हत्यारा नाटक का पात्र खूनी बन जाता है। नरभक्षी साहूकार धनीराम का खून करके और खुद को दोषी समझते हुए कानून के हवाले कर देता है। यह मानवता का परिचय और आदर्शवाद है। जो भी वह हत्यारा एकांकी समाज के लिए समाज को सही दिशा दिखाने का आख्यान है। एक ही दृश्य में दूसरा नाटक सबरी मिला तो 2 बार खेला गया था। दिग्विजय की मंदिर नाट्य मंच में प्रदर्शित धार्मिक नाटक है। राम के जीवन में 4 नारियां मुसीबत की जड़ थी। प्रथम राम को वनवास भेजने के सौतेली माँ कैकेयी, दूसरी थी कैकेयी की बचाने वाली मंथरा, तीसरी रावण की बहन सुपर्णखा और चौथी थी द्रौपदी। जो मायके से घर आते समय रास्ते में किसी के घर रुक गई थी तो उसके पोते निकाल दिया, उसे घर से निकाल दिया, अर्थात राम के जीवन पर असर पड़ा। जो भी हो, राम को वनवास होने के बाद की कथा वस्तु पौराणिक आध्यात्मिक सत्यपरायण के आधार पर सीता हरण, सबरी राम का मिलना, सबरी से अहंकारी रावण मार्गदर्शन, अहंकारी रावण का किसी न किसी के बहाने से होता है। सबरी मिला उदाहरण स्वरूप लिखा है चौथे दृश्य चित्रण में समेटकर। तीसरी नाटक समर्पण द्वारा सन 1965 में प्रकाशित नाटक प्रसारित नाटक है। सन 62 के भारत चीन युद्ध के विभीषिका का पंचम दृश्य के भीतर समेटा गया ऐतिहासिक तथ्यों का जिक्र करते हुए एक माँ भारत माँ की रक्षा में अर्थात समर भूमि में जाने के लिए वीर की वीरता बखान करते हुए अपने सैनिक पुत्रों को समर में जाने के लिए उत्साहित करती है। इसे जन्म दिया है पर जन्मभूमि भारत माँ की हवा पानी अन्न से तुमने जीवन पाया है, इसलिए जन्मभूमि भारत माँ तेरी माँ से बढ़कर है। उसकी सेवा और रक्षा में सदा सजग होकर समरभूमि में युद्ध करना ही तेरा एवं निष्ठा है। उत्साहित करने हेतु माँ एक आदर्श नारी के रूप में खड़ी उतरती है। तो पात्र अंबर की पत्नी वीरता से के साथ लड़ने के लिए फुकरी देकर जिंदा करती है। देश रक्षा के लिए समर्पण की कथा वस्तु एक ज्वलंत उदाहरण है देश के सिपाहियों के लिए। चौथा नाटक साइनो जो वर्ष 2022 की साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कृति है। यह नाटक 3 दृश्यों में संरचित है। डॉक्टर फीस के बिना निर्मला की अस्वस्थ सासू माँ के इलाज से इनकार कर देता है। निर्मला और डॉक्टर से बहुत कहा सुनी और नोक को आदेश देता है इस औरत को घर से बाहर कर दो। तब निर्मला कहती है राती भैया निकल जाऊंगी। तब राती को गांव में मेरी भी एक बहन और माँ है। यह सोचकर वह भावुक हो जाता है। निर्मला को बहन के रूप में देखता है और उस घर से निकल जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो डॉक्टर की माँ जो सब सुन रही थी उठकर कहने लगी इस घर से राते नहीं जाएगा, राते इस घर का सदस्य है। अपने पुत्र डॉक्टर रोहित से कहती है मेरे स्वामी का डॉक्टर के इलाज के बिना स्वर्गवास हो गया तो मैंने तुझे डॉक्टर ठान लिया। वैसे जीवन निर्वाह के लिए उस अर्थव्यवस्था के बाद गरीब दुखियों की सेवा करना ही कर्तव्य है, धर्म है। और उपदेश देने पर डॉक्टर निर्मला के घर जाता है और निर्मला की सासू माँ दवाइयाँ देता है। पाकिस्तान से युद्ध थमने के 2 साल बाद आया हुआ विक्रम भाईचारे के रिश्तों में
अर्थात साइनों में एक दूसरे से बंध जाता है। किसी मानवतावादी भावना से इस सामाजिक नाटक का जन्म 2018 में प्रकाशिका श्रीमती नेपाली के बिंदु प्रकाशन से का मानना है कि मेरे एक में साइनों मानवतावाद, राष्ट्रवाद की स्वतंत्रता आंदोलन तथा संवेदनशील संस्कार के महत्वपूर्ण उद्देश्य को दर्शाते हुए सामाजिक समस्या का समाधान स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद मानववाद को महत्व देते हुए पकड़ाए वहन की नद्य अर्थात मानवतावाद को महत्व करके चलने का उपदेश देते हुए कहा कि मनुष्य के चक्षु से जो निकले अश्रु मनुष्य ही पोषते गए, धर्म है झगड़ा और कुछ नहीं कहते हुए और मानव को मानवता के सांचे में ढालने का उपदेश देते हुए गया है। पर मैं यहीं पर विराम दूंगा। आमंत्रित कर रही हूँ आपको। साहित्य अकादमी की उपाध्यक्ष प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी, सभागार में उपस्थित प्रबुद्ध साहित्यकारगण में सबको प्रणाम। तो मैं इस सम्मान के लिए आभार व्यक्त पाने के कारण ही आज मुझे आप जैसे ज्ञानी गुणी साहित्यकारों के सम्मुख अपनी बात, ये पुरस्कार को और भी अच्छा लिखने की प्रेरणा देते हैं एवं उनके लिए चुनौती भी अंतर में मदद करती है। प्रभु की करुणा, मेरे माता पिता बेटे के सहयोग एवं सर्वोपरि परिपुष्ट प्रभावित करने वाले अपने अग्रज साहित्यकारों के प्रति मैं ऋणी हूँ। मैंने अपने विचित्र जगत चरण में हूबहू अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता के गवाह है। मैं गायत्री वाला पंडा एक भारतीय लेखिका हूँ। अपनी मातृभाषा ओडिया में कविताएं लिखती हूँ, कहानी और स्तंभ, लेकिन मूलतः मैं एक कवि हूँ। अब कविता का मंत्रोच्चारण करती हूँ। जब किसी लेखकों को पुरस्कार मिलता है तब वह और सम्मान उसके लिए नहीं होता बल्कि उसके लेखन के लिए होता है। यह महत्वपूर्ण पुरस्कार मुझे नहीं, मेरी काव्य कृति दया नदी को मिला है। यहाँ मैं दया नदी से एक छोटी सी कविता पढ़ना चाहूंगी। ये कविता दया नदी मेरा जो किताब है वो हिंदी में अनुवाद हो गया है, उसका अनुवाद किए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्रा ने। युद्ध कभी समृद्धि न ही लाता है शांति, युद्ध प्रगति लाता ही नहीं, लाता है पश्चाताप और पीड़ाए अनंत। दया नदी ओडिशा में भुवनेश्वर के निकट बहती एक नदी है। इसी नदी के तट पर कलिंग युद्ध हुआ। दुनिया का इतिहास पढ़ने से पता चलता है कि यह युद्ध मानव समाज का सबसे बड़ा युद्ध था। यह सम्राट अशोक और कलिंग के था। इस युद्ध में दया नदी का पानी बन गया था रक्त प्रवाह। युद्ध की विभीषिका ने सम्राट चंद्र रूपांतरित किया था। मेरी काव्य कृति दया नदी इसमें और परिशिष्ट को मिलाकर कुल 64 कविताएं हैं। युद्ध की सारी विभीषिका, सारी स्पर्धा और सारे अहंकार में सिर्फ एक स्वर गूंजता है, जो है पराजय का। ये कविताएं
इतिहास की कोई तात्विक समीक्षा या काव्य रूप नहीं है, बल्कि ये इतिहास की नदी में नौयात्रा करने वाले समय। मैं इतिहासकार नहीं हूँ, एक मामूली इंसान हूँ। इतिहास पढ़ते समय किसी प्रमाण, तर्क या सिद्धांत ने नहीं, बल्कि और आलोचित युद्ध की भयावहता ने, जिसकी एकमात्र गवाह है दया नदी। इतिहास में दया नदी से भेंट होने के बाद दया नदी अब एक नदी बनकर नहीं, बल्कि रक्त प्रवाह बनकर बहने लगी मेरी सिरा प्रसिराओं में। मुझे लगा मानो दया नदी में आत्मा है। इतिहास से, किंवदंती से अधिक सच है उस आत्मा की अर्थमयता, जो अर्थमयता आज भी हर ओरिया के रक्त में अमृत के रूप में बह रही है। इंसान को इंसानियत की राह दिखा रही है, शांति, मैत्री और प्रेम का जयगान कर रही है। कविता मेरे लिए सपना या विलास नहीं, बल्कि कुछ कुछ कर आकार लेने वाली एक यंत्रणा, एक पीड़ा, एक लाचारी है। कविता लिखना मेरे लिए शौक या आग्रह नहीं, एक अंतरंग आवश्यकता है, जो ठीक मेरी सांसों की तरह है, जिसके बिना मैं सब हूँ, जड़ हूँ। कविता मेरे लिए स्वतः बहते आंसू है, जिसके बह जाने के बाद कुछ समय की आश्वस्ति से मैं आमोदित हो उठती हूँ, पुलकित और जीवंत हो जाती हूँ। मेरे अंतर जगत का शीर्ष उद्वेलन मानो उड़ जाता है कागज पर और कविता में तब्दील हो जाता है। मेरी कविताएं यथार्थ की अधिक करीब है। इसके कई कारण हैं। हमारी सामाजिक व्यवस्था दिन प्रतिदिन बदलने लगी है। आर्थिक समृद्धि लाने के लिए मनुष्य अधिक दबाव, अधिक अस्थिरता, अधिक आतंक और अधिक सपनों का शिकार होता जा रहा है। उनकी कतार में खड़ी है मुझ जैसे एक कवयित्री, अपना विरोध प्रकट कर रही है। कविता में अपना असंतोष और विरोध व्यक्त करना आज के कवि के लिए अपरिहार्य हो गया है। जबकि वह बंदूक नहीं उठाता, राजमार्ग के जुलूस में शामिल नहीं हो पाता, नारे नहीं लगा पाता या किसी अन्य दुखी इंसान के साथ खड़े होकर उसके आंसू नहीं पोंछ पाता। सिर्फ कविता उसके साथ खड़ी रहती है, दुख और संघर्ष के पक्षों में। मेरी भाषा एक आम इंसान की भाषा है, दृष्टिकोण का स्वतंत्र इतना कि जो विषय रोजमर्रा के जीवन में उपेक्षित है, जो हमें अति नगण्य और मामूली लगते हैं, वही विषय मेरे कविता बन जाते हैं। मेरी कविता संभवतः कहानी सी लग सकती है, परंतु कल्पना पर एकाधिपत्य विस्तार न करके साफ साफ कहने की शैली और बोलचाल की भाषा में होती है मेरी कविता। भले ही मैं दुख को, क्षोभ को, अफसोस को प्रांजल और मार्मिक भाव से रूप देती हूँ कविता में, पर मेरी अभिव्यक्ति कविता नहीं है, क्योंकि कविता के स्वतःस्फूर्त आवेग को उपयुक्त और समर्थ भाषा प्रयोग से जीवित रखना पड़ता है। इस भाषा को लेकर मैं भविष्य के लिए संभावनाएं बुनती हूँ। नहीं, कविता समाज को बदलने की दावा नहीं करती, ना ही समस्या का समाधान करना कवि का काम है। वह कुछ पाठकों की मानसिकता को झकझोर सकती है, कुछ हद तक बदल सकती है या प्रभावित कर सकती है। कविता पाठक को कुछ पल के लिए अपने अनुमान और कल्पना के साथ एकाकी छोड़कर चकित कर देगी, अपने अनुभव और ज्ञान तमाम संभावनाओं के द्वार खोल देगी। किसी युद्ध, एकता, आतंक, सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता, कुसंस्कार अथवा मनुष्य की पैशाचिक प्रवृत्ति को दूर करने का काम भी कविता का नहीं है। कविता का काम दुनिया को नए सिरे से दिखने की भावना उत्पन्न करना और आत्मदर्शन कराना है। जबकि कभी कभी मैं खुद से पूछती हूँ, मैं कविता क्यों लिखती हूँ? कविता लिखने से क्या मिलेगा? मेरा पति नहीं जानता मैं कविताओं में क्या कुछ लिखती हूँ। जबकि रात बीतते ही रोजाना उनके साथ आना जाना, उठना बैठना रहता है। जिस सब्जी वाली से मैं सब्जी खरीदती हूँ, वो नहीं जानता कि मैं कविताएं लिखती हूँ। जो अखबार वाला रोजाना मेरी बालकनी में अखबार डाल जाता है, उसे भी नहीं मालूम कि मैं कविता लिखती हूँ। जो छोटे छोटे बच्चे मेरे घर के सामने वाली मैदान में खेलते हैं, वे नहीं जानते कि मैं कविता लिखती हूँ। जो डाकिया मेरे नाम की ढेरों चिट्ठियां लेकर है, क्या वह जानता कविता लिख कहाँ पढ़ी होगी उसने मेरी कविता? किसी पत्र पत्रिका में या अखबार में?
तो फिर मैं कविता क्यों लिखती हूँ? यह सवाल खुद से मैं करती रहती हूँ। और जो लोग मुझे यह सवाल करते हैं उन्हें भी हर बार जो जवाब देती हूँ वह मनगढ़ंत होता है, यह भी मैं जानती हूँ, क्योंकि इस सवाल का सही सही जवाब मेरे पास भी नहीं होता। और सबसे संतोषजनक उत्तर शायद यह है कि मैं कविता अपने लिए लिखती हूँ। मन ठीक न हो तो कोई गाना सुनता है, कोई सिनेमा देखने जाता, मंदिर जाता है, समुद्र किनारे जाता है, बाजार जाता है, पार्क जाता है, ओपेरा देखने जाता है। मैं चुपचाप जाकर टेबल के पास बैठ जाती हूँ। घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, न जाने कितना समय। काफी खोलकर आड़ी तिरछी रेखाएं खींचने लगती हूँ। गुमसुम सी, मदहोश सी, उच्चार, अस्थिर, उन्माद भरी। उसी पागलपन को, उसी अस्थिरता को कविता कहकर पुकारती हूँ। मैं पुकारती हूँ, सारी दुनिया पुकारती है। दुनिया यानी कि एक निर्दिष्ट जागरूक पाठक वर्ग के लिए मैं लिखती हूँ। और कभी कभी मैं लिखती हूँ परिस्थितियों की ताड़ना से। जानती हूँ कि कविता जिनके लिए लिखी गई है वे कभी नहीं पढ़ेंगे उस कविता को, फिर भी मैं लिखती हूँ। शायद में अभाव में उन्हें दिलासा देना चाहती हूँ। उनके दरवाजों पर दस्तक देकर उनके घरों में जाना चाहती हूँ। उनमें उनसे कहूँ कि मत हो ये इंसान, रो मत। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम युद्ध करो या उत्सव मनाओ, अन्न उपजाओ या नारे लगाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मगर हर जगह सभी दुखियारों के पास मैं राहत बनकर नहीं पहुँच पाती, ना ही इतनी सी बात साफ साफ कह पाती हूँ। कह नहीं पाती, रो नहीं पाती, खुद को बिखेर नहीं पाती। तभी मेरी वह अंतर्वेदना न जाने कब शब्द बनकर उतर आती है, बिना तैयारी, बिना योजना के। जिसमें छल नहीं होता, बौद्धिकता नहीं होती, चतुराई नहीं होती, होता है एक आवेग, जिसे आप सब कहते हैं कविता। मुझे लगता है वह कविता नहीं, वो कविता नहीं है, कभी न खत्म होने वाली एक यात्रा है। स्वप्न, सत्य, अथक और आनंदमय यात्रा। मुझे लगता है हृदय न हो तो कविता नहीं लिखी जा सकती, निष्ठा न हो तो भी। ठीक उसी तरह विशुद्ध आवेग, अंतर की शुद्धता, अन्यमनस्कता और अस्थिरता, ये सब मेरे अंदर है। बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर सोचते रहना अच्छा नहीं है, ऐसा मेरा परिवार कहता है, दुनिया कहती है। मैं भी समझती हूँ, मगर कविता नहीं समझती। मैं कविता को चाहती हूँ और कविता जैसे भी है उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेती हूँ। कविता से लगाव होने की वजह से शायद मैंने जीवन को अधिक अंतरंगता से भोग रही हूँ। अर्थ, यश और प्राप्ति से परे है मेरी कविता। असंतोष, असहायता, असफलता, क्षोभ, क्रोध, करुणा और रोदन के प्रतिरूप बनकर धड़कन बन चुकी है। स्पंदित दियों की स्पर्धित उच्चारण बन चुकी है। वैराग्य होने पर भी हृदय तो स्पंदित होता ही है। क्रांति नहीं, आशाएं हैं, संभावना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री जी। अब मैं पंजाबी में पुरस्कृत श्री सुखजीत सिंह को आमंत्रित करती हूँ। वाइस प्रेसिडेंट शर्मा जी और हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांतों से आए हुए पुरस्कार प्राप्त लेखक, साहित्य अकादमी के अधिकारी, कर्मचारी, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। और अभी जो मैडम गायत्री बालाजी बोल कर गए हैं उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि मैंने कुछ जो बातें करनी थी वो उन्होंने कर दी।
तो ज़्यादा सामान नहीं लूँगा। कोशिश करूँगा कि मैं 10 मिनट में अपनी बात कह सकूँ। और धन्यवाद मैं पहले कर लूँ कि मेरी साहित्य अकादमी का धन्यवाद है, यहाँ तक पहुँचा तो माँ बाप का धन्यवाद है, बापू का बहुत धन्यवाद है। मैं 1-2 मिनट में मैं आपको बता दूंगा कि वो धन्यवाद के मेरे के। और मेरा अपने भाइयों का, जो मेरे से छोटे हैं, तीनों भाई, हम ज्वाइंट फैमिली है अभी तक, तो वो जो सब खेती वेती वो संभालते हैं, मेरे को उन्होंने फ्री कर रखा है लिखने पढ़ने के लिए। मैं अपने उन भाइयों का भी धन्यवाद करता हूँ। छोटा तो मेरे साथ ही जो माया भी है, और अपनी पत्नी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर वो मुझे लिखने, तो मैं लग गया था बचपन से ही, बड़े जब हुई है वो आई है तो ना संभालती तो मैं शायद यहाँ तक ना आता। और आपको ये भी अच्छा लगेगा कि वो यहाँ नहीं है, इसलिए भी फिर भी मैं उसकी देखो कर रहा हूँ, सामने नहीं है। और सचमुच इसका मतलब उसने किया है ऐसा कुछ। मेरी बेटी है, जब भी मैं उनको सबको याद करता हुआ आपसे थोड़ा मुखातब और कोशिश करूँ कि मैं ज़्यादा सामान आ सकूँ। मैं लिखने क्यों लग गया, क्या हुआ था ऐसा? बचपन था, बचपन में बापू ने कुछ ऐसी जगह जाकर, थोड़ा आप समझ लेना मेरी हिंदी पंजाबी नुमा जो है ना, आप तो बहुत समझदार हैं, समझ आएंगे। कुछ ऐसी जगह, दरिया सतलुज था एक तरफ एक बूढ़ा दरिया था, बताया वो होता तो जवान था वैसे तब तो। उसके बीच में कोई जंगल का इलाका था, तो बहुत सारी जमीन खरीद ली, तो जमीन ले ली। उसमें फसल तो होती नहीं थी, कांटे ही कांटे थे, और रहने के लिए जमीन के बीच ही झोंपड़ा डाल लिया। तो अब झोंपड़े में माँ बाप हैं, छोटे भाई हैं, गाय है, बछड़ा है, 2 कुत्ते हैं, एक बिल्ली है, झोंपड़ी, ये घर परिवार है। उसमें मैं बड़ा हुआ हूँ पल पल के। तो वहाँ क्या था, जंगली जानवर तो ज्यादा नहीं थे, सांप बहुत। सांप ने थे कि जो हमारा झोंपड़ा था उसकी छत से नाग लटक जाता था। और आप जरा कल्पना कीजिए कि तब फाड़ कर आसमान तक, जब वो नाग लटका होता था, डर रहे थे, भय बहुत था। और फिर एक लालटेन रखते थे रात को रोशनी के लिए, थोड़ा मन को थोड़ी तसल्ली रहे। तो क्या देखा, एक दिन एक सांप आकर वो जो कीट पतंगे आते हैं रोशनी पे, उनको खाने लगा। तो वो लालटेन भी दूर रख दी। ये तो बाद में पता चला कि तब ये फैसला कैसे हुआ था, क्योंकि जब दोनों तो स्थान होते हैं, एक छत, यहाँ आप सुरक्षित महसूस करते हैं, एक रोशनी, दोनों स्थानों पर जब दुश्मन कब्जाने लगे, आपके दोनों स्थानों पे कब्जा करने लगे, या तो आप भाग खड़े होंगे या लड़ेंगे। और एक दिन वो फैसला हो गया कि हम लड़ेंगे। और लड़े भी ऐसे कि माँ छप्पर से निकल रही थी, झोंपड़े से हाथ में आटा था, सामने सांप आ गया। माँ ने बोला, रे बड़े, उठा लाठी, मार मजदूर को। मैं लाठी उठाकर मारने लगा और वो सांप मर गया, भूल जाता। उस दिन ये फैसला हुआ कि यहाँ मनुष्य के पांव पर और कोई नहीं रह सकता फिर। और तब से रह रहे हैं। और इसी बहाने में बात कर रहा था, लेखनी में नहीं, मेरी की है कि मेरे में अब भय नहीं होता कि ये लिख दूंगा तो ये सरकार ये करेगी, वो ये बोलेगा, ये कहेगा। मैं जो कहना चाहता हूँ कलात्मक तरीके से वो कहता हूँ। मेरे पास एक बहुत बड़ा जो खजाना था, वो था साहित्य, वो था महाभारत, वो था रामायण, मेरे बापू के पास थी जो। और मेरा बापू फिर वारिस शाह थी, हमारी तो इतिहास था, सिख इतिहास था, गुरुओं की साखियां थी। मैं उनके बीच में बड़ा हुआ, पढ़ता पढ़ता तो मुझे वहाँ जो पता चला कि ये जो संकट होता है, क्राइसिस होता है, अगर ये ना हो और आप लेखक नहीं बन सकते, या तो आप टूट जाएंगे। संकट ही है, दुख ही है और कष्ट है। अगर आप उसको उसके ऊपर काबू पा लेते हो तो लिखने लग जाते हो, नहीं तो आप टूट जाते हो। अभी वो बात जो कर रहे थे ना, तो मैंने वो एक उसमें था
आप सब ने पढ़ा है, मैं तो याद ही करा रहा हूँ कि वो महाभारत का युद्ध हो रहा है, द्रोणाचार्य और अर्जुन आमने सामने हैं, हम लड़ते हैं। दिन जो है वो डूब गया, अपने अपने खेमे में आ गए। दुर्योधन बड़े गुस्से से अपने द्रोणाचार्य के अंदर खेमे में आया, आकर बोला कि आप हमारे सेनापति हैं, गुरु हैं, अर्जुन आपका शिष्य है, लेकिन क्या आप मन से नहीं लड़ रहे? वो आज सुबह जब अर्जुन बाण मारता था तो आपका रथ 50 हाथ पीछे चला जाता था, आप बाण मारते थे तो अर्जुन का रथ सिर्फ 5 हाथ जाता था पीछे। तो द्रोणाचार्य हंस पड़े, बोले कभी मेरे बाणों में भी ऐसा ही बल था, ऐसी ही आग थी, क्योंकि जब मेरे मित्र राजा ने बेपति करके मुझे निकाला था धार कर, तो अंदर मेरे बहुत गुस्सा था, कष्ट देखे थे, संकट थे, तो बाणों में ये आग थी। फिर यहाँ आ गया, आप लोगों ने महल दे दिए, दास दासियां आ गई, सुख मिल गया, और जो सुख था ना वो मेरे बाणों में उतरने लगा। और अर्जुन जो है अभी 12 साल बड़ों में काट के आया है, कष्ट थे, दुख थे, द्रौपदी को नग्न होते हुए देखा है। अर्जुन जैसा मर्द 1 साल विराट के यहाँ हिजड़ा बनकर रहा है, वो सभी दुख यहाँ हैं, वो उसके बाणों में आ गए हैं। इसलिए वो जब बाण मारेगा 50 तो क्या, मेरा रथ तो 100 हाथ पीछे जाएगा। मुझे ये समझ लगी कि अगर सुख में रहे, एसियों में बैठकर, अंदर बैठकर लिखा, तो कलम में वो बात नहीं आएगी। तो मैं सुख से बहुत डरता हूँ। मैं कष्ट, संकट ये जब मेरे पास नहीं होते तो मैं लिख नहीं सकता। और मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि साहित्यकार जो हैं, कलाकार जो हैं, वो आम आदमी का, साधारण आदमी का ऋण नहीं उतार सकते। जो साधारण आदमी ने दिया है हमें, वो किसी ने नहीं दिया साहित्य को हमें। मैं तो उनके बीच में जाकर बैठता हूँ, मिलता हूँ, उनके दुख सुख चिंता सुनता हूँ, तब लिख सकता हूँ, नहीं मैं लिख नहीं सकता। पढ़ा ज्यादा नहीं हूँ मैं, डिग्रियां नहीं है मेरे पास, लेकिन उसकी इतनी कृपा रही है कि जब पढ़ना शुरू किया तो समझ आ गई कि शब्द में शक्ति क्या होती है, एक सेंटेंस, वाक्य, बातचीत में और डायलॉग में फर्क क्या है। आप रेलगाड़ी में जाते हुए किसी से बातचीत कर रहे हैं, वो बातचीत है। संवाद क्या होता है, जिसमें शक्ति होती है। अगर आप प्यार का संवाद कोई लिखते हो तो पाठक, पढ़ने वाला, मुझे लगता है कि पढ़ने वाला पाठक किसी से मोहब्बत ही ना करने लगे आपका वो पढ़कर, तो क्यों लिखना है। अगर आपने उसको खड़ा करना है उसको, तो वो आपके पढ़ने के बाद वाक्य पढ़े, एक सेंटेंस और आदमी उसके खड़ा हो जाए। ये मुझे रामायण से पता चला। सुग्रीव आया रोता हुआ राम जी के पास कि राम जी मेरी पत्नी जो है वो भी ले गए, राज्य भी ले गए, मेरा भाई बाली जो है, अब देखिए ना अच्छा नहीं किया। राम जी ने बाण उठाया और बाली को मार दिया। सुग्रीव बोला जी अब हम माता सीता को ढूंढेंगे। ये वो कहते पहले अपना राज्य संभालो भाई, ये काम भी करना है, पहले राज्य संभाल लो। अब राज्य संभाल लिया, सत्ता आ गई, तो सत्ता जो करती है वही हुआ। भूल गया, सत्ता में जाकर लोग भूल जाते हैं। सुग्रीव भी भूल गया। अब राम जी ने भेजा, अब संदेशे भेजे जा रहे हैं, आ रहा हूँ, एसपी को बोला है मैंने, उसने एसएचओ को भी बोल दिया है, पार्टी निकली है, इधर को ढूंढ रहे हैं करता, लेकिन आ नहीं रहा। 4-5 महीने बीत गए। तो एक दिन राम जी ने, मैंने यहाँ से सीखा कि क्या शब्द में शक्ति क्या है। उन्होंने लक्ष्मण जी को भेजा कि कुछ नहीं कहना, सिर्फ एक वाक्य, एक सेंटेंस उसको ये बोल के आ जाना। और वो गए और जाके वो लगा करने, आओ जी बैठ, तो ये वो कहते नहीं, सुन लो बस, ऐसा कहा प्रभु राम ने कि मैंने जिन बालों से बाली को मारा है ना, जिस बाणों से बाली को मारा है, वो बाण अभी भी मेरे पास हैं। और लक्ष्मण जी तो, उनको तो इतना रास्ते का पता नहीं था, वो तो पता नहीं कहाँ से सीधे आए होंगे, उसको शॉर्टकट पड़ था, वो सीधा पहले पहुंच गया राम जी के पास। ये शब्द की शक्ति है, मैंने ये यहाँ भारतीय दर्शन से सीखा है। और ये सारा जो है मैं यहाँ मैं विराम देता हूँ। तो आप सबका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुखजीत जी। हमें ये कार्यक्रम जो है 1 बजे का समय मिला था, 1 बजे तक खत्म करना था। लेकिन अभी हमारे 6 रचनाकार और हैं, हमें उन्हें सुनना है।
तो मेरा फिर से निवेदन है उनसे कि जो समय सीमा निर्धारित है उसी में अपनी बात रखने का प्रयास करें। मैं आमंत्रित कर रही हूँ संस्कृत में पुरस्कृत जनार्दन प्रसाद पांडेमणि जी को। वंदे वाणी विनायको। आज की सभा की अध्यक्षता कर रही साहित्य अकादमी की उपाध्यक्षा डॉक्टर प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी, हमारे बीच उपस्थित पूरे देश के बड़े बड़े साहित्यकारों तथा प्रिय बंधुओं, मैं संस्कृत का कवि हूँ। मेरी दीप माणिक्यम रचना साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हुई है। इसके लिए मैं सबसे पहले साहित्य अकादमी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। वेद, पुराण, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, संगीता इत्यादि वैदिक वाग्मय के ग्रंथ तथा महाभारत, रामायण इत्यादि संस्कृत साहित्य के उत्तरवर्ती साहित्य के ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। तो और संस्कृत इस समय पूरे विश्व में पढ़ाई जा रही है। विश्व में जो भी यूनिवर्सिटीज हैं वह एशियन स्टडीज में संस्कृत है और संस्कृत में आजकल सारी विधाओं में लिखा जा रहा है, चाहे वो महाकाव्य हो, चाहे वो गीत काव्य हो, चाहे वो नाटक हो, कथा काव्य हो, चाहे वो संस्मरण हो, सारी विधाओं में संस्कृत लिखी जा रही है और संस्कृत भाषा का भविष्य भी पूरी तरह से हमारे देश में सुरक्षित है। कविता लिखना कहां से शुरू किया, इस पर आपसे दो तीन बातें करूंगा। मैं मूलतः करुणा का कवि हूं। कविता के विषय में कहा गया, करुणा जामे माता, आदि करुणा मेरी माँ है। करुणा जामे माता, विरहो जनकः, विरह मेरा पिता है। करुणा मेरी माँ है, विरह मेरा पिता है। करुणा जामे माता, विरहो जनकः, सहोदर शोकः, और शोक सहोदर है। उत्कलिका नुबैष्टा, उत्कलिका मन चिंता तुरता, चिंता तुरता मेरी सखी है। मैं चंचल बाला कविता हूं। ये कविता का परिवार है। मैं भी मूलतः शोक से ग्रस्त कवि हूं। मेरी कविता का आरंभ हुआ था जब मैं 5 वर्ष का था और मेरी महिषी माँ स्वर्गलोक गामिनी हो गई थी। स्नेह का अभाव मेरे शैशव में रहा और एकांत प्रिय में होता चला गया। इसके बाद वियोगावस्था में मेरे अंदर कविता जगी और मैंने 9 साल की उम्र में सबसे पहले माँ पर कविता लिखा। इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा गांव में ग्रहण करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय आया। यही से एमए किया, पीएचडी किया। इलाहाबाद साहित्य की नगरी है, वहां पर साहित्यकारों से मेरा संबंध हुआ और मुझे कविता में उर्वरता मिली और कविता अनेक धाराओं के साथ फूट पड़ी। आज कविता इसी प्रकार से लिखी जा रही है। मैं एक संस्कृत भाषा में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा है, इस पर एक बैठे हैं हमारे भाई जी। आपके यहाँ गजल जो है और उसे हम कहते हैं गलत जलिका।
संस्कृत में गजल को गलत जलिका कहते, गलंत जलान अश्रुन यश्यामसा, गलते हैं झरते हैं आंसू जिसमें, वो गजल है। आपकी अपनी परिभाषा है, हमारी अपनी परिभाषा है। तो मैं संस्कृत में बानगी के तौर पर एक गजल सुना रहा हूं। हाँ, द्वंद्वात्मके ननु जीवने गुरु गोरखाणाम का कथा, द्वंद्वात्मके ननु जीवने गुरु गोरखाणाम का कथा, शुष्कोदके रस सागरे कभी को विदानाम का कथा, स्वार्थांधकैः नवनीत लेपन लालिते वृते युगे, स्वार्थांधकैर् नवनीत लेपन लालिते वृते युगे, चाटुक्ति बग्न पुरंदरे नाम का कथा, चाटुक्ति बग्न पुरंदरे गुण गुम्फिता नाम का कथा, ईर्षा कषायित दोष दूषित भग्न संबंधांतरे, ईर्षा से कषेदे संबंधों के दूषित हो जाने पर, ईर्षा कषायित दोष दूषित भग्न संबंधांतरे, श्रद्धा विनिर्गत हटके शुभ भावना नाम का कथा, श्रद्धा विनिर्गत हटके शुभ भावना नाम का कथा, द्वंद्वात्मके ननु जीवने गुरु गोरखाणाम का कथा, वैषम्य माद्रियते स्वयं, भारत सरकार से कह रहा हूं, वैषम्य माद्रियते स्वयं, समता यदीयम तावकी, रे नेत्रिभूषण सांप्रतम तव जल्पिता नाम का कथा, रे नेत्रिभूषण सांप्रतम तव जल्पिता नाम का कथा, द्वंद्वात्मके ननु जीवने गुरु गोरखाणाम का कथा, वैषम्य माद्रियते स्वयं, वैषम्य माद्रियते स्वयं, समता यदीयम तावकी, रे नेत्रिभूषण सांप्रतम तव जल्पिता नाम का कथा, रे नेत्रिभूषण सांप्रतम तव जल्पिता नाम का कथा, द्वंद्वात्मके ननु जीवने गुरु गोरखाणाम का कथा, साफल्यदा साफल्यदा यदि जातिराधुनिके त्वदीये भारते, साफल्यदा यदि जातिराधुनिके त्वदीये भारते, रे नेत्रिभूषण सांप्रतम तव जल्पिता नाम का कथा, द्वंद्वात्मके ननु जीवने गुरु गोरखाणाम का कथा, आश्वासकैर् आश्वासकैर् विनिहन्यते यदि नित्यमाशा नागरी, आश्वासकैर् विनिहन्यते यदि नित्यमाशा नागरी, विश्वास वैरी जिते जिरे मणिकल्पिता नाम का कथा, विश्वास वैरी जिते जिरे मणिकल्पिता नाम का कथा, द्वंद्वात्मके ननु जीवने गुरु गोरखाणाम का कथा। अंतिम बंध है, काकैर वकैर ननु पेचकैर महिते सभानाम मंडपे, काकैर वकैर ननु पेचकैर महिते सभानाम मंडपे, रे शारदे तव विज्ञहंस सुभाषितानाम का कथा, रे शारदे तव विज्ञहंस सुभाषितानाम का कथा, द्वंद्वात्मके ननु
जीवने गुरु गोरखाणाम का कथा शुष्कोदके रस सागरे कवि को विदानाम का कथा। ये हमारे यहाँ का साहित्य है जिसकी एक वानगी मैंने आपको दी। मेरी जो रचना यहाँ पुरस्कृत हुई है दीप माणिक्यम, उसका आप संक्षिप्त परिचय दे करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। दीप माणिक्यम मेरा गीत काव्य है। दीप माणिक्यम में करीब 200 श्लोक हैं और 151 गजल और गीतियां हैं। हाँ, थोड़ा सा संक्षेप में करें कृपया। जी, मैं बार बार कर जी 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 थोड़ा संक्षेप में कर दीजिए प्लीज। जी 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 उन्हीं का उसमें परिचय है, वही पुरस्कृत हुई है। धन्यवाद। धन्यवाद पांडे जी। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ संथाली में पुरस्कृत जगन्नाथ सोरेन जी को। मेरा पुनः निवेदन है कि समय सीमा में अपनी बात समाप्त करने की कोशिश करें। जी जोहार साहित्य अकादमी वाइस प्रेसिडेंट सलाम को जोहार। I am Jagannath Soren, pseudonym Kajli Soren. I was born in little village named Madhupur, belong to Khatra Thana in the district of Benpura in West Bengal. The people of the village and the adjacent areas mostly speak in Santali language. I consider myself fortunate I am Jagannath Soren, pseudonym Kajli Soren. I was born in little village named Madhupur, belongs to Khatra Thana in the district of Benpura, West Bengal. The people of this village and adjacent areas mostly speak Santali. I consider myself fortunate and grew up listening and learning my mother tongue Santali. Though the medium of instruction was Bengali in primary school. Our teachers, who were mostly in Santali speaking, helped us understand and learn all subjects. It is to be noted that during the early 60s, the cultural movement towards conservation and preservation of Santali language and literature has been growing among the indigenous community. Poets and songwriters such as Guiram Hembrom, the poet Sarada Prasad Kisku, and many other poets used to travel from village to village in the other city to other, singing in song, distance, culture, preservation, and empowering young minds
to provide the cultural heritage. My childhood has been spent in such an avenue. Like most others, I have been influenced during the times and have started writing songs from young age. However, writing songs could not contain or satisfy my creativity, and hence I moved towards expressing my thoughts and ideas through poetry. I started writing poetry in the age of 14, 15 years age. The first books that had published in 1982, Tacho Didi, and 1984, Daigong, contain the poems that I had written between 1968 to 1983. Most of the poems in the two books reflect the various of the indigenous people, their rights, claims, and the need for culture and survival through practice. The next books of poems that I able to publish in 1993 named Duri Chitang. For this book, I had honored and the poet by the Bharat Jakat Majhi Santali Writers Association, All India Santali Writers Association. During the period, I had also written essays and articles voicing many concern about the difficulties and faced towards the development of Santali language and literature. The, the next two books have been published, the Gandhar Mein Champa Bahar and in 2009 and 2012, Ojo Katamani Moon. The book that has been awarded the Sahitya Academy Award, Prabanna Balire Sonan Punjab, was published in 2019. Just as the flow of Sabarnaka, just as the fleeting time, this is the poets have been woven with the reflection and kunda of our imagination and dreams that overflow with emotion. Most of the poems are expressed in terms of symbolism, and the poems bring out in innermost essence and color of life, emotional content, imagination, the description of mind of creation, the glory of creator, love, love of and love for creation, language, culture, religion, belief of mankind, and celebrate the joy of life and living. The poems write about the life of the common people, their sorrow and happiness, anger and thirst, struggle and torture, express the superstition of the part of each of our narrative, many of poems. The poems put forward several issues such as language and culture, denunciate the need and age of building resistance and the struggle resistance of Thankal society in the longer again. The poems also give us insight and engage our tradition and investment of humanity and understanding through the most non-human life forms that are surrounded us.
I would like to end my stop by thanking the Honorable President of Sahitya Academy, Vice President of Sahitya Academy, Secretary, the convener, the jury for selecting my books for the prestigious Sahitya Academy Award. Also, I would like to congratulate fellow engineers, friends, scholars, and audience. Thank you. Namaskar. Johar. बहुत बहुत धन्यवाद जगन्नाथ सोरेन जी। अब मैं थोड़ा सा क्रम में बदलाव कर रही हूँ। जी जी नहीं, इनको बैठने में प्लीज एक मैं आमंत्रित कर रही हूँ उर्दू में पुरस्कृत अनीस अशफाक जी को। जी जी थैंक यू। कल मैं आपकी खिताबत का कायल हुआ था, मीन्स आर्ट ऑफ स्टोरी। आज मैं आपकी शराफत का कायल हूँ। कोई और शेयर कर रहा होता तो 10 मरतबा टूट चुका होता, और मैं इससे इम्प्रेस हूँ। एक लतीफ़े के बाद बात करता हूँ। एक बार एक क्वेश्चन पेपर बच्चों के स्कूल में सेट किया गया, और उसमें एक सवाल ये था कि सुकरात को, सोक्रेटिस को जहर क्यों दिया गया। तो बच्चों ने अलग अलग जवाब लिखे, जो कोई निखर था, कोई ये था, बोलता बहुत था, ये सब करता था सिस्टम के खिलाफ। एक बच्चे ने कहा कि सुकरात को जहर इसलिए दिया गया कि वो बहुत लंबी लंबी तकरीरें करता था। तो थोड़ा सा एक सेंस ऑफ प्रोपोर्शन जो है, आपको शुरू से 10 मिनट कहे जा रहे हैं। हमारे सुरेश जी ने क्लियर आपको इंस्ट्रक्शन दिए थे कि ये कहना है विद इन 10 मिनट्स। अब इसके बाद में इस गागर में सागर भरना ये सबसे बड़ा हुनर है जी। कुछ चीज़ें मैं अपनी मदर टंग में बोलना चाहिए, लोगों ने समझता था। कोई साहब रिपोर्टर यहाँ बैठे हों, कहीं देखिए अपनी मादरी जबान को छोड़ के अंग्रेजी में बोलने लगे। अंग्रेजी में एक ये मैं ये बातें कह रहा हूँ कि एक कम्युनिकेशन गैप ना हो। काफ़ी फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल I thank Sahitya Academy for considering my novel for this prestigious award. I started my literary career at the age of 15, composing couplets and writing short stories. My mother, a precious repository of traditional education, was my first teacher. She introduced to me the iconic literary personalities of Urdu and Persian when I was a child. She often used to narrate the lengthy portions of great narrative dastans of Lucknow, and by listening to them, I learned the art of storytelling. Later on, I used this art extensively in my novels, and this element is dominant in my novel Path Sharab. Under this title. When I entered into the field of literary criticism, I did not forget the lesson of my mother. Quote, how to read and understand a piece of literature. Unquote. I firmly believe traditional tools formed by our own theorists rather than Western principles, which are often so confusing and overlapping. So, modernism, postmodernism, deconstruction, etc., do not have much importance for me. My sole principle to judge any piece of creative writing is not what to say, how to say. When I entered into the field of literary criticism, I did not forget the lesson of my mother. Quote, no, sorry. As for the theme of the award-winning novel, Path Rag,
Miraj. It has its origin in Ruswa's 19th century Urdu novel Umrao Jan Ada, a novel that celebrates the career of highly accomplished courtesan of Lucknow. I gave a fictive twist to the Ruswa's original story in which two different impulses collide in the description of Lucknow. One, a vivid and pungent evocation of its present, which is poor, decadent, and crumbling, and two, a kingly melancholy hymn to a glorious past resplendent with elitist lifestyles. In the end, I, with all respects and regards, dedicate this prestigious award to my mother and the legendary fiction writer Nayyar Masood, from whom I have learned a lot in my life and in my literary career. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद अशफाक साहब। मैं आमंत्रित कर रही हूँ सिंधी में पुरस्कृत कन्हैया लाल लेखवाणी जी को। कम समय में, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। जी जी जी। नमस्कार। मुझे अपनी पुरस्कृत रचना के संबंध में अपने विचार संक्षिप्त में प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान किया गया है, इसे तो मैं साहित्य अकादमी का आभारी हूँ। मैं पिछले 5 दशकों से सिंधी भाषा, साहित्य और संस्कृति पर अध्ययन, अध्यापन और लेखन कर रहा हूँ, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि 3 दशक में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, जो भारत की सबसे बड़ी संस्था है, वहाँ मैंने काम किया। इस बहाने सारे भारत के लिए मुलाकात हुई, उनकी रचनाओं से परिचित हुआ, क्योंकि मुझे पुस्तकें भी लिखनी थी सभी के लिए, लिटरेचर की, लैंग्वेज की, कल्चर की। तो ये जो मेरा लेखन है सारा, वो उनका ही है जिनके लिए मैं लिखता हूँ। मेरी रचनाएं ज़्यादातर रिसर्च ओरिएंटेड है, क्रिटिसिज्म पर है, लेकिन क्रिटिसिज्म नॉट लाइक थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म। मेरा उद्देश्य यही रहा है कि हमारी सिंधी भाषा जो है, मैं उसके बारे में 1 मिनट ये बताऊंगा कि भारत में सिंधियों की कुल पॉपुलेशन जो है 0.25। आप अंदाज लगाइए, स्टेट बेस्ड लैंग्वेज है, सारे देश में बिखरी हुई है, लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा कि सिंधियों में वो जहाँ भी रहते हैं, जो भाषी हैं, वो जहाँ भी रहते हैं शिक्षित है, 100% लिटरेसी है, 100% बाइलिंगुअल है, और जहाँ रहते हैं वहाँ ढल जाते हैं हर दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, साहित्यिक दृष्टि से। इसलिए उनका विस्तार भी उनको मिल गया, उनका अनुभव जो है वो विश्व स्तर पर आ गया, और वो उनकी रचनाओं में है। कई लोगों को ये, हमारे कई सिंधी भाई भी कहते हैं हमारे हिंदी में कहाँ है लिटरेचर, लेकिन वो उनसे अभी अपरिचित है। अपरिचित होने का एक ही कारण है, बिखरे हुए हैं, उनको फॉर्मल एजुकेशन के अवसर नहीं मिल रहे हैं। तो यह पुस्तक लिखने के प्रति मेरा 2 लक्ष्य थे। एक यह था कि अभी तक जो सिंधी में, चाहे पाकिस्तान में भी जितनी भी पुस्तकें छपती है, क्योंकि वहाँ तो सिंधी लोग 3 करोड़ के करीब रहते हैं, तो मैंने देखा कहीं भी एक स्थान पर प्रारंभ से लेकर आधुनिक काल तक किसी ने भी इस एंगल से, यानी रिसर्च ओरिएंटेड,
क्रिटिकल एंड इंफॉर्मेटिव। इसको इंफॉर्मेशन चाहिए, उसमें संक्षिप्त दृष्टि भी हो और एक अलग एंगल से मैंने लिखी है। ज़्यादा सैद्धांतिक बातों में न जा करके पूरी राजनीतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि देते हुए मैंने यह पुस्तक जो लिखी 400 पेज के करीब की है, उसमें से 200 पेज तो मैंने आदिकाल और मध्यकाल को दिए। तो सिंधी में मध्यकाल जो है सिंधी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाह सचल स्वामी ये विश्व स्तर के बहुत बड़े कवि हैं। हमारे सिंधी जहाँ भी जाते हैं शाह सचल स्वामी का नाम जरूर लेते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वो क्यों महान हैं उसके बारे में उनको पढ़ने को नहीं मिला है। और जो बहुत इधर उधर फैला हुआ लिखा रहता है उससे उनको समझ में भी नहीं आता है कि उसकी महत्ता क्या है। तो आई वॉज वेरी क्या चाहिए इनको, ये मैंने दृष्टि लगा। और इसलिए दूसरी बात ये थी कि आफ्टर पार्टीशन जो है सिंधी यहाँ आए, बिखर गए, लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा किसी भी भाषा ने आज भी सिंधियों ने आते से ही कम से कम 50 साहित्यिक संस्थाएं, 50 नाटक मंडलियाँ, यानी वो सारा यहाँ संघर्ष करके सिंधी को मेंटेन रखा। वो जहाँ भी रहते हैं उसमें मिल जाते हैं, लेकिन अपनी अपनी आइडेंटिटी कायम करने का संघर्ष उनका जारी है और दिल से है। और मैं इसलिए भाग्यशाली हूँ क्योंकि 3 दशक तो मैंने सेंट्रल इंस्टीट्यूट में काम किया। उसके बाद भी नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी और जितनी भी अकेडमी है सिंधी की, गवर्नमेंट्स की, इंक्लूडिंग साहित्य अकादमी, मैं सभी का सदस्य रहा, लैंग्वेज एक्सपर्ट रहा। और जो गैर संस्कारी सिंधी संस्थाएं हैं उसमें भी मैं जुड़ा रहा। तो वो सारा प्रतिबंधित होता है मेरे रचना संसार में। सरकारी संस्थाओं ने भी मुझे बहुत सहायता दी। अभी श्री राम जवाहरानी जी ये सहयोग फाउंडेशन चलाते हैं विश्व स्तर पर, वो विशेषकर सीधे मैं आपका जरूर मैं सुनूंगा। तो ये प्रोत्साहन है, ये उत्साह है और सिंधियों में है। और मैंने जो लिखा है उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है, सिंधी में पोइट्री और शॉर्ट स्टोरी भारत की किसी भी भाषा, हिंदी से जो भी है, उसके टक्कर की लिखी गई है। निबंध जो है, जो प्री पार्टीशन बहुत हमारे 8 बड़े निबंधकार हुए, जो जिसकी अपनी विशेषता इतनी महत्वपूर्ण है तो मुझे नहीं लगता किसी दूसरी बात की भाषा में होगी, गर्व के साथ मैं कहता हूँ। लेकिन उसके बाद यहाँ रिसर्च ओरिएंटेड लिखा गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब मैंने जो लिखा है उसका उपयोग हो रहा है। उसका उपयोग विद्यार्थी कर रहे हैं, टीचर्स कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले कर रहे हैं और रिसर्चर्स भी कर रहे हैं। तो उसकी मुझे खुशी होती है। और ज़्यादा मैं विस्तार में उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये जो सारा मेरा कार्य है ये दूसरों तक भी पहुंचना चाहिए। इसलिए मैंने अभी उस पुस्तक को अपडेट किया है। जो पहली जो जिस पर मुझे पुरस्कार दिया गया है उसमें 2015 तक मैंने सिंधी साहित्य परिषद का काफ़ी अलग दृष्टि से वर्णन किया है। और अभी हमारे सिंधी भी बिखरे हुए हैं, सिंधी पे कटे हुए हैं, और दूसरे लोग भी सिंधी के बारे में जानना चाहते हैं। आज हिंदी विश्व स्तर पर एक संपर्क भाषा बनी हुई है और इसीलिए मैंने हिंदी में भी इसका अभी अनुवाद किया है, जो अभी कंपोज भी हो गई है। उससे असिंधी भाषी सिंधी साहित्य से परिचित होंगे और हमारे सिंधी भाषी भी जो अपनी भाषा से कटे हैं उन्हें भी उनसे कुछ न कुछ मिलेगा।
और मेरा ये सफर जारी रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैयालाल लेखवाड़ी जी। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ तमिल में पुरस्कृत एम राजेंद्रन जी को। पुनः पुनः निवेदन की बहुत ब्रीफ में अपनी बात को रखें, क्योंकि हमें हर हालत में 2 बजे कार्यक्रम खत्म करना है। Respected madam, I won't take more than 1 minute just to help you all. In fact, I am a proud Indian and I am a proud Tamil speaking Indian. Throughout the world, language is an official language for 5 countries in the world. All Indians should be proud of that. Tamil is an official language for Sri Lanka. Tamil is an official language in Maldives. Tamil is an official language in Mauritius. It is an official language in Fiji. It is an official language in Singapore. It is an official language in Malaysia. So as Indians, we should all be proud of Tamil language, which is our common heritage. So I am writing in Tamil language, and this novel, which has brought me Sahitya Academy, is talking about the proud heritage, a proud common heritage of our Indians. As many of you know, Indian rulers, Chola rulers, Rajendra Chola and Rajaraja Chola, were the conquerors of the Southeast Asia, entire Southeast Asia. In many countries, you can find the street names, major road names, King Rajendra's, King Rajaraja's name. It is found in countries up to Philippines. So we had such a common heritage, and we are all feel proud to be Indians. And our endeavor is to bring our common heritage to the mainland, to the national capital. The book I have written, Kalapani, is 56 years prior to Sipai Mutiny. 56 years before Sipai Mutiny, there was a common uprising in Tamil Nadu, starting from Pune. In Pune, there was a freedom fighter by name Tundaji Wag. From Tundaji Wag up to Nanganeri, near Kanyakumari, this 1,400 kilometer area was covered by King Mardubandiyars, who piloted the freedom struggle. And though the freedom struggle failed, 500 people were hanged on one place in Tirupattur, and the 73 freedom fighters were transported to Penang Island and Sumatra Island. This Andaman Nicobar Island was a criminal settlement in the year 1900. Prior to 1900, Penang was a criminal settlement. Sumatra was a criminal settlement. And 73 Tamilian people have been transported. And in these 73 people, we have a Muslim, we have a Christian, we have many Hindus. All the communities, including Dalits, were part of these 73 people. And I am bringing out those things in that novel. I request that the note attached with the speech can be taken as read. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद हेम राजेंद्रन जी। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ तेलुगु में पुरस्कृत मधुरांतकम नरेंद्र जी को। थोड़ा सा धैर्य आप लोग और रखें, हम अंतिम रचनाकार को सुन रहे हैं। हाँ।
not more than 10 minutes. Yeah, thank you. Thank you so much. Good afternoon to all of you. Literature has been there in our family for centuries. But the Telugu short story came to my house even before I was born. My birth in 1957 coincided with the publication of my father's story in the Ugadi special number of Andhra Patrika Weekly, which my father always considered an important milestone in his writing career. I began to write short stories right from my 16th year, and my entry into literature was as natural as the fish learning swimming. When I was asked by my lecturer to write a story for the college magazine, I took it very naturally and wrote a story based on a friend's life without thinking of the style and structure. Then I began to write stories for nearly a decade with the only intention of seeing my name in print. If at all there are any promising sparks in them, I do believe that they belong to my father. I joined the post-graduation course of English literature in 1979, and up to the completion of MPhil in 1983, I didn't write any stories as I had to focus my attention completely on the studies. By the time I took up writing in 1984, there was a total difference in the past. I began to choose my own subjects and began to write in my own way, and to put it crisply, I began to write my own stories. My father, who was a renowned short story writer by the time I began to write, never forced his influence on me, never wanted to be a teacher to me, and created a great literary democratical world to rear in freely. By the 1980s, my younger brother also began to write stories, and by 1990s, both of us could create niches of our own without being referred as merely the sons of a renowned writer. Afterwards, my mother also wrote two stories, and my younger sister wrote more than 30 stories. When the Sahitya Academy Award was bestowed on me a few months back, many of our friends and well-wishers observed that ours is the first case in Telugu where father and the son both got Sahitya Academy Award. But I humbly and sincerely give the entire credit to my father. The teaching of English literature and guiding research in the areas related to it helped me to widen my horizons and study and perceptions. Slowly and gradually, I realized that writing should be a sadhana of literature, a vehicle to probe deep into my psyche, a platform to understand the world all around me, and a quest for the truth. I realized that a writer has to write primarily for himself, and in the process he would reach the others. I realized that the people all around me are not different from me, and I cannot I can understand more about them by understanding myself. Writing has become almost an adventure for me. I find it interesting and absorbing only when I lay my own road and walk in a path where no others trod. Only when I am confident that the travel will become a thrilling adventure, I take it up. I have been writing with the room provided by the life and employment. I abhor the method of searching for the themes in the life exclusively, but I try to give literary manifestations to those memories and experiences which haunt for a considerable time. I want to express spontaneously without any aberrations and colorings, as I believe that literature should be a mere tributary to life. I also believe that there are no answers to many questions in life and literature, but a writer always should have a quest for the truth and answers. I have found a never-ending competition between life and literature. By the time a writer captures the truth, it would be transformed and might have taken a different and unexpected shape, and thus the life of such literature. So the writers have been using different types of artistic tools like metaphors, similes, images, and also magic realism to grasp the fleeting moment. I realized that a writer should modernize himself by learning and adopting these methods. I get wearied of using the same mold for the second time, and so acquiring the new modes and methods have become inevitable for me. To come to this with me and the world, writing has become a psychological necessity for me. As writing is a kind of dwelling deep into the being, the process of writing has become tedious and painful, but the epiphany achieved at the end of the story or a novel is so spellbinding that I take up one more task
after completing the present. I wrote my first novel when I was 20 years, very much like writing the first story. Though the Telugu novel was very much popular 2 decades back, it hasn't updated both in terms of themes and structure. I realized that it needs lot of research and endurance to write a novel. Bhuchakram, a novel on the growth of a village in a town, Amsterdam the Adbhutam, a novel on the nature of religion and religious fundamentalism, Kondakinda Kotturu, a novel on democracy and the making of a leader in it, are the I wrote besides Manodharma Parag. I don't know the nuances of music, but I have been an ardent listener of Carnatic music since my childhood. I have been reading the cultural pages of noted English newspapers, and I do believe that a writer has many things to learn from the art of music. When I read many biographies and autobiographies of many musicians published of late, I found that many noted women in those stories appear and disappear without any notice, though they play vital roles in the lives of those protagonists. And I found that they were denied of a voice and simply hushed off. I felt like giving them a voice, and that is the gem from which the entire novel had born and progressed. I chose a, a renowned musician's life as the thread that intertwines with the lives of the others, made those neglected women to voice their own anguish, and in the process of unfurling the story of the main character. As the central figure of the novel is a well-known person, and some of the incidents related are taken from her life, it provides curiosity for the reader to read further. But while doing all these things, I simply caught hold of a small tendril, but when I dragged it, unaware, the entire valley took off. The patriarchal Indian society created a separate caste called Devadasi, sanctimoniously claiming that they are meant for the temples and for religious ceremonies. The imperialist British government created havoc in their lives, but when it abolished dancing and worshipping by the Devadasis in the temple. But in a room of their own, the patriarchy tirelessly created, Devadasis mastered the art of music and dance and carried the torch of Carnatic music and Sadar or Bharatanatyam for over 5 centuries. They proved their unparalleled quest for perfection in the forms they often passed. The portrayal of their lives provided ample opportunities to read, understand, and analyze the relationships between art and artist, man and woman, and mind and body. Above all, the writing of this novel made me to realize the strong bonds I as an individual and our place, Vandanadu in particular, have with South India as a whole. The vast area of Kanyakumari to Chennai has been a bilingual place in which Telugu and Tamil went hand in hand for, I'm sorry, for many centuries. It has a unique culture in great writing, music, dance, flourished in their friendship. The fondness I had for music in my childhood, I then realized is an influence of the men and milieu of this great culture. My great grandfather migrated from a hamlet near the port of Hindi to another village in the southernmost part of erstwhile North Karkar district on the request of the villagers to teach them Telugu language and literature. The formation of states based on linguistic reasons proved to be a menace to our culture and civilization. After the completion of the novel, Manodharma Paragam, I realized that a different kind of literary adventure has been waiting for me to re-establish the roots of our culture. I want to recreate and record the migration of my great grandfather and trace out the changes took place in Tondanadu afterwards. Thus, now I am at the beginning of another novel. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद मधुरांतकम नरेंद्र जी। I heartily thank all the award-winning writers who shared their literary journey on this juncture. It is quite a happy moment that the writers' meet took place
right on 12th of March. That is, in fact, the Sahitya Akademi Foundation Day. Finally, now I invite Professor Kumar Sharma ji, Vice President, Sahitya Akademi, to share her views as well as conclude the meet. Thank you all. नमस्कार। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत 22 रचनाकारों के वक्तव्य को हमने सुना और उनको सुनना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहा। एक रचनाकार की रचना प्रक्रिया क्या होती है, उसके लेखन की प्रेरणा क्या है और उसके संघर्ष क्या हैं, क्योंकि लेखन की मंजिल भी बहुत आसान नहीं होती है और किसी भी कला की मंजिल आसान नहीं होती। कोई भी कलाकार, चाहे वो संगीत की दुनिया का हो, साहित्य की दुनिया का हो, चित्रकारी की दुनिया का हो, उसके अपने संघर्ष होते हैं। हम शिखर पर पहुंच जाता है कोई साहित्यकार, लेकिन वहां तक पहुंचने में उसकी जदोजहद जो रही है, उसका जो संघर्ष रहा है, उसका शायद लोगों को अनुमान नहीं होता है। तो हमने उनके संघर्षों को भी सुना और उनके तमाम अनुभवों को हमने सुना और हमने ये जाना कि अपने लेखन के लिए वो अपनी सामग्री को कैसे जुटाते हैं, अपनी कलम में कैसे वो संवेदना को भरते हैं, शिल्प कैसे आता है उनके साहित्य में। अनुभव, स्मृति, पात्र सबको ढूंढ करके वो लाते हैं रचनात्मक पलक पर। अनुभव बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम सबके पास एक अनुभव है, लेकिन हम सब, हर कोई लिख नहीं सकता। उस अनुभव में आपको पकना होता है। केवल अनुभव को अगर आप लिखते हैं, मात्र अनुभव को लिखते हैं, तो वह विवरण बन करके रह जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी रचनाकार के लिए अपनी कलाकृति में विचार को पुरोना। जो विचार होता है वो किसी भी रचना की रीढ़ होता है, उसका जो विजन होता है। विजन बहुत महत्वपूर्ण होता है और हमने विविध भारतीय भाषाओं के रचनाकारों को सुना तो मैंने महसूस किया कि सभी रचनाकारों ने अपने रचनात्मक स्रोतों की तलाश के लिए एक ही जगह को चुना है। वो अपने रचनात्मक स्रोतों की तलाश के लिए अपने मिथक की तरफ गए हैं, अपने इतिहास बोध की तरफ गए हैं, स्मृति बोध की तरफ गए हैं। नाम लिया गया रामायण और महाभारत का। हमारी जो भारतीय साहित्य की विरासत है वो एक ही है। विविध भाषाओं में लिखा जाता है, लेकिन उसकी संवेदनाओं का मूल एक ही है। स्वाधीनता संग्राम, मातृशरण गुप्त हिंदी के, तमिल के सुब्रमण्य भारती और बंगला के बंकिम चंद्र चटर्जी एक ही तरह की संवेदनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। राष्ट्रीय चेतना का स्वर एक ही जैसा है, सांस्कृतिक पुनरुत्थान की चेतना एक ही जैसी है। ये हमने महसूस किया इनको सुनते हुए। बहुत संक्षेप में, ज्यादा समय नहीं लूंगी, कुछ बात रखना चाहूंगी साहित्य के संदर्भ में। साहित्य की दुनिया में बहुत सारे मोड़ आए, बहुत सारे मोड़ आते हैं, आंदोलन होते हैं, लेकिन अंततः साहित्य में क्या बचता है? अंततः साहित्य में बचता है मनुष्य का शाश्वत संघर्ष, उसकी अभिलाषा, उसके हर्ष और विषाद, उसके राग रंग और सबसे बड़ी बात उसकी जिजीविषा, आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा। साहित्य का मापदंड क्या होना चाहिए? ये सुर निकल करके आई है आज। साहित्य का मापदंड क्या होना चाहिए? साहित्य का मापदंड ये होना चाहिए कि साहित्य किस तरह से जीवन की जटिलताओं से साक्षात्कार कराते हुए मनुष्यत्व की खोज का संकल्प लिए हुए है।
कैसे वो आदमियत की आवाज लगाता है, मानवीयता को पुकारता है, कैसे वो रागात्मक संवेदन में सबको बांधता है। बात आई कि यथार्थ को अभिव्यक्त करता है साहित्य। निश्चित तौर पर युगबोध, सामयिक परिवेश के बिना साहित्य लिखा नहीं जा सकता। कल्पना से तो साहित्य नहीं लिखा जा सकता, कल्पना भी उसका एक तत्व है। साहित्यकार जब युगबोध को व्यक्त करता है, उस युगबोध को जिसको उसने अपने व्यक्तिगत अनुभव और प्रामाणिकता के बीच, सामाजिक प्रामाणिकता के बीच उपलब्ध किया है। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि केवल यथार्थ, हम कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन साहित्य समाज का केवल दर्पण है, बल्कि साहित्य समाज को आगे ले जाने वाली पगडंडी। आप उसको एक आचार्य संहिता ना माने, लेकिन एक अच्छा साहित्य आपकी संवेदना के तंतुओं को तान करके खोलता है और आपके नैतिक संवेदन को जगाता है। एक साहित्यकार एक नैतिक साझेदारी से चलता है। उसकी साहित्यिक यात्रा अगर आप देखें तो वो वर्तमान में रहता है, परिवेश की आत्मीयता में निरर्थक हो जाने की जो पीड़ा है वो हर साहित्यकार अनुभव करता है। सामयिक परिवेश से प्रेरणा लेता है, लेकिन अपनी ऐतिहासिक विरासत को भी नहीं भूलता और भविष्य की आकांक्षाओं को अपने सामने रखता है। उसकी नैतिक साझेदारी वर्तमान के साथ भी होती है, अतीत होती है और भविष्य के साथ भी होती है। नएपन की परिकल्पना, स्वाधीनता, ये सब साहित्य के तत्व हैं। व्यक्ति अपनी खाती को लेकर के चलता है, अपनी ऐतिहासिक विरासत को लेकर के चलता है, अपने सांस्कृतिक मूल्य को लेकर के चलता है। साहित्य, किसी ने कहा है कि साहित्य संस्कृति का एंटीना है। मैं कहना चाहूंगी साहित्य एक सांस्कृतिक कर्म है। वो क्यों है कि हमारी सांस्कृतिक प्रक्रिया में राष्ट्रीय, मानवीय, सामाजिक सरोकारों की उद्भावना जो रही है, उसी से हमारा सारा साहित्य जुड़ता है, उसी से जुड़ता है हमारा साहित्य। और साहित्य संस्कृति से ही परिचालित होता है, एक सांस्कृतिक बोध है उसमें। और आज का जो साहित्य है, जो आज लिखा जा रहा है, आप कह सकते हैं कि उसमें इतिहास बोध, राष्ट्रीयता, उसका स्वर मुखर नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि हमारा इतिहास बोध, स्मृति बोध हमारे जीवन बोध का अंग बन करके अभी भी साहित्य में प्रकट होता है। और विविध भारतीय भाषाओं के जो रचनाकार यहाँ उपस्थित हैं, जिनको सम्मान मिला है, जिनको हमने सुना है, और भी जो साहित्यिक बंधु हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, वो ये महसूस करेंगे, महसूस करते हैं कि विविध भारतीय भाषाओं के बीच जो एक समन्वय का रिश्ता है, सहयोग का जो रिश्ता है, वो हमारे सांस्कृतिक मूल से आता है। हम एक साहचर्य प्रणाली में विश्वास करते हैं, जहां पर प्रकृति भी हमारी सहचरी है, पूरा लोक हमारा सहचर है, पूरे लोक को लेकर के चलते हैं हम, पूरे वसुधैव कुटुंबकम को लेकर के चलते हैं और मानवीयता की आवाज लगाते हैं। ये भारतीय साहित्यकारों की शक्ति है और इसी शक्ति को लेकर, इसी ऊर्जा को लेकर हमारा भारतीय साहित्य प्रवाहमान है और इन्हीं सूत्रों को लेकर के वो आगे बढ़ेगा। और मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि हमारे जो साहित्यकार जिनको सम्मान मिला है, वो पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी शक्ति के साथ, सांस्कृतिक बोध के साथ ऐसे निरंतर अपनी लेखनी से जो है बहुत अच्छी सुंदर कृतियां हमें देते रहेंगे और समाज में प्रेरणा भी जगाते रहेंगे और साहित्य सृजन की उत्सुकता आगे आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसमें भी जगाएंगे। आप सबने, मुझे समय कम था तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वक्तव्य के लिए आप सबको धन्यवाद। आप सब जो साहित्यिक बंधु इस लेखक सम्मेलन में आए, आप सबको धन्यवाद। और हमारे मीडिया बंधुओं को मैं देख रही हूँ कि वो बहुत कम समय के लिए बैठे लेकिन लगातार खड़े रहे और इसको कवर करते रहे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबका आभार। नमस्कार।